Can you all see my screen? A blank page? I could see that. Okay. So I think everybody could hear and see the screen, right? Because Mohit is not in the campus. Mohit is outside the campus, and he's telling that his internet is not very strong. But just to check. Huh. Okay, Mohit. Okay, right? Okay. So, good morning, everyone. As Sir introduced, I'm Mohit. I'm working for Global Foundry, and today I'll talk about quantum mechanics, basically the basics of quantum mechanics. Let's get started, and you can interrupt me anytime if you have any questions or anything. You can interrupt me anytime, and please feel free to talk in between me to interrupt anytime any questions. Okay. So what we will do is that see, quantum mechanics itself is a vast field. So what happened in early 20th century, people started doing experiments. Well, people were always doing experiments, but in 20th century, they started doing some strange experiments, and they found that the existing theory, which was classical mechanics, were unable to explain those experiments. Then they formulated where people formulated theory, which came to later known as quantum mechanics. Well, the history is a little bit more involved, but to cut short, the quantum mechanics were able to explain the experiments which were happening at that time. So to speak in a rough way, whenever the size of the particle or the mass of the particle reduces or the size of the particle is very small or the mass of the particle is very small, the mechanics of those particles could not be explained by classical mechanics. So people moved to quantum mechanics. Now, quantum mechanics in itself is a vast field. In a way, you can say it is a tool which can be applied to electromechanics. You have quantum electromechanics, which can be applied to particle physics, which can be applied to many fields. So what we are doing is we are applying quantum mechanics to our solid state devices. Now, to teach quantum mechanics itself will be a course, and itself one course is not sufficient. So what we will do is we'll extract the part of the quantum mechanics which is useful to us. Okay, and we'll go through that. Now, even to do that is difficult because 2 hours is not sufficient even to do that. As you can discuss with your seniors and other TAs, we used to do this in almost 5-6 lectures. So 2 hours is not that much sufficient. So what I am planning today is to do most of the thing through intuition. So we'll cut down the mathematics. We'll not do any derivation or anything, maybe just one. And we'll cut down through mathematics and try to develop intuition. Okay. And I'll later give you a reference, and that reference is very accessible to engineer reference, and you can just read that, and it is very small. It's not that big of a reading also, and you can then understand all the mathematics behind it. Okay, fair enough. Should we start? Okay, somebody say something. I could not see. Yeah, I think you should go ahead. Please okay. Go ahead. Okay, so let's start. So when I say solid state devices, you have to understand one thing. So what are we interested in a solid state devices? So we want to characterize a device, right? This device characterize a device. Now, what do we mean by characterizing a device? Characterizing a device means we want to understand the response of the device, right? And what is the response? We'll give some input. And what is the output? Okay, so in a device, generally you give a voltage and you see what is the current flowing through this. So basically you want to understand the response of the current on application of a voltage, okay, as a function of voltage. Now, to break down, current is basically given by charge into velocity. Now you have to balance the unit. This charge is charge per unit length. So coulomb per centimeter into velocity. So if you balance that, you'll get the unit. So charge into velocity. Okay. Now charges, when we talk about charges, what are the charges which are carrying current in this any solid state device? Those charges are the electrons, right? Those are the electrons which is carrying your current. So you want to know about how many charges are there. So how many?
electrons are there basically, and then you have to know about how are they moving. Okay, how are they moving? So basically, entire solid state device, or I'll say entire physics of transistors, is boiled down to understanding these two things. You have to understand how many electrons are there in a device, what are their statistics, and then you have to see how they respond to the external stimulus or how they move. Okay, so our idea is this. Now to see both of them, you have to see, you have to understand, you have to see, you have to understand electron. Now electron, obviously, as I told, electron doesn't follow the classical mechanics principle, so we are taking help of quantum mechanics. Okay, so that's what we'll do. So to start with, what happened in classical mechanics, you might be aware that if you have a particle, okay, if you have a particle or anything, if you know the position and the momentum of a particle at any point of time, you can completely know about the trajectory of the particle. You can completely describe the particle. Okay, so if you know about the position and momentum of a particle, your laws of motion allows you to completely describe the particle. So that's what happened in a classical mechanics. But as you go toward quantum mechanics, one of the things which I think many of you know, there is an uncertainty that you cannot know x and p together. So there's no way you can know x and p about a particle, and therefore you cannot apply all those theory. So what does quantum mechanics tells you? So quantum mechanics tells that with every particle, there is a function associated with it called wave function. Let us denote the wave function by psi. This is called wave function. This is called wave function. So quantum mechanics tells you if, with any particle, they are associate a function called wave function. And if we know the wave function, we can completely describe the particle. So that's what quantum mechanics tells us. And the way to know the wave function of a particle is through an equation known as Schrodinger equation. And I'll write the Schrodinger equation. So this is your Schrodinger equation, which you can use to understand, you use to extract the wave function. Now let me spend some time here and tell you a few things here. First of all, uh, I'm using a lot of assumption while I'm writing this Schrodinger equation. Okay, so this is not the exact form of Schrodinger equation. This is written under a lot of assumption. While so today's lecture, I will also tell you this thing that uh, I'm skipping a lot of the parts because we cannot go into detail at this point of time. 2 hours is not sufficient for that. So I'm skipping a lot of the part, but all these are under certain assumption, and that is good for us. We are not missing much. But yes, if you want to know in detail, you can always go back. So this is written under certain assumption. And this is not the exact form Schrodinger equation, but this is good for what we want to understand today. And second, we want to know that second, we want to spend some time on Schrodinger equation to understand various part. Let's spend some time and understand various part. So this is your reduced Planck's constant. Okay, so this is given by h upon 2 pi. H, you know, this is the Planck's constant. M is your mass of the particle. Now this is the mass of the particle. Okay, I know you might have heard about effective mass and all those different mass, but we'll develop all those concepts slowly, and don't confuse this with any other thing. It is the exact mass of the particle, the exact rest mass of the particle. If we want to say physical, we want to stay physically correct, is the mass of the particle. Okay, and another thing is wave function. This is wave function. This is the potential energy. This is the potential energy. This is the total energy of the particle. And again, this is the wave function.
Okay. So now another thing which we want to see, this Schrodinger equation we have written under certain assumptions. Second thing we want to know is this is 1D, 1D Schrodinger equation. See, we have only one variable which is x here. Okay. So we have only one variable x. So it is a one-dimensional Schrodinger equation. Okay. Similarly, you can write in three-dimensional, but we'll restrict our analysis to one dimension. Okay. So that is the case. Another thing we want to know, which is very important for us for this equation, is to I'll ask you, if you have this equation, you know what you want to find. You want to find the wave function. What is the input to this equation? Anyone? What is the input to this Schrodinger equation? Anyone? पुराने लोग नहीं, उनको सबको पता है, बहुत एग्जाम दे लिया उन्होंने इस क्वेश्चन पे. Hello, anyone? What is the input to this Schrodinger equation? Now, from this equation, what is the thing? Suppose let me frame this maybe again. Suppose you have a device. Again, remember one thing: we want to know the current and velocity of a charge into velocity of a device. So if I have a semiconductor device, any semiconductor crystal, let's say it is silicon. If you want to, I want to apply this equation here and want to know how the wave function for an electron look like. Suppose there is one electron here. I want to apply this equation to this electron and see how this electron behave. What is the thing which I need? What will be the input to this equation? Total energy and potential energy. If I know, then we can calculate the wave function. Total energy and potential energy. Yes. Okay. Anyone else? Any other answer? Please respond. There is no right and wrong answer. Let's make this interactive. No problem. We have. If we skip the mathematics, we have a lot of time to discuss. What is the input to? It is very important to understand this equation. To understand rest of the thing. What is the input to this equation? What is the thing which we need in order to solve this equation? Potential distribution in space. Potential distribution in space. Okay. Anyone else? Any other answers? Okay. So the only thing which we need in order to solve this equation, yes, you are correct. Whoever that was, is the potential distribution in a space, the potential energy. This is the only input to this Schrodinger equation. You have to understand that. See, reduced Planck's constant. If we see reduced Planck's constant, this is a constant, right? H is a constant, 2 pi is a constant. Again, 2 is a constant, m is the mass of the particle. Suppose if you are solving for an electron, mass of the electron is fixed, 9.1 10 minus 31 kg. You cannot change that. Psi is the output which you want. Energy, total energy, is again the output which you get, is the output which you want. Okay, so the only input the Schrodinger equation is u naught of x, is the potential energy of the system. So what you need is the potential energy distribution of a system. Okay, so that's the only input you need in order to solve the Schrodinger equation. It is very important to understand that if we know the potential distribution inside a system, we can solve the Schrodinger equation. Clear? Another thing which we have to understand is that it is not easy to solve Schrodinger equation. It's not at all easy, and sometimes it is not even possible to solve Schrodinger equation. So let me tell you about that. Suppose your potential, so this is the only input, right? Suppose your potential distribution looks something like, suppose I say your u of x, it is 1D Schrodinger equation. We'll not talk about 3D. So from now on, our universe is 1D for this, all this discussion. Suppose your potential distribution something look like this, and there is an electron here. Okay. So first of all, what you need the equation for u of x, because you will plug the equation here and then you have to solve this differential equation. Well, first thing, to find this equation itself is not easy, sometimes even not possible. Second, even if you find the equation of this, sometimes it is not possible to solve this equation because the differential equation will be so complex, you'll not be able to solve it. Okay, so then what people do is that they use some technique like DFT, or there are many other approximations which can solve your Schrodinger equation. Okay, but there is a catch here.
there is a catch that it is very, very slow. Very slow. Now, if I have to tell you, we are doing some experiments using DFT. And if I have to tell you that, suppose you have a system where there are, let's say, 3, 4, 5, 6 atoms. Okay. Let's say there are 6 atoms. Then what will you do? And you have to find how this one electron between this atom behaves. Okay, so then you have to apply Schrodinger equation on this. Okay, and then your U of x will be the potential energy due to all these atoms. Now I cannot solve this analytically. It is not possible anyhow to solve this analytically. We cannot solve this by hand. It is not possible to solve this by hand. Not at all possible. So people use computers, DFT. Now, in order to solve this system of, let's say, 3, 4, 5, 6 atoms, 6 atoms for some electrons in a supercomputer, with, let's say, 300 core. So can you guess how much time will it take to solve this system? A simple system of 6 atoms with one electron, where you have to find the dynamics of an electron. I'm solving this in a supercomputer with 300 cores. Can you tell me how much time it will take? An estimate? Anyone? Anyone? बोलो, कुछ बोलो, estimate. Hello. कुछ estimate कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा? Anyone? कुछ तो बोलो. निशांत, कितना टाइम लगेगा? Guess. मतलब गैस तो सर मतलब मिनटों में हो जाना चाहिए, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. हाँ, 6 एटम है, सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व करना है, मिनटों में हो जाना चाहिए. लगता तो सही है. एनीवन? और कौन कौन है क्लास में? शारदा, कितना टाइम लगेगा? मे बी हाफ एन आवर, पता नहीं. हाँ, गेस करना है. वही. और कोई? It can take day. It can take an entire day sometime. Sometime it may happen within 4 or 5 hours, or sometime it can take an entire day. Okay. So now you look. अगर आपको एक सिलिकॉन एटम का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ 6 एटम्स है, उसका अगर you have to solve Schrodinger equation and it can take an entire day or 4 or 5 hours, just imagine what will happen if you have a silicon crystal. Silicon crystal तो अभी पढ़ा ना सब लोगों ने. What is the density of a silicon crystal? कितना होता है? 10 power 21. 10 power 21, yes, 10 power 22. So 10 power 22 per centimeter cube, right? So just imagine अगर एक ट्रांजिस्टर है जिसके अंदर जिसका लेंथ अगर लेट्स से 20 नैनोमीटर है, हम इतना छोटा ले लेते हैं, जिसका ये हाइट भी 20 नैनोमीटर ले लेते हैं, विड्थ भी 20 ले लेते हैं. सो 20 नैनोमीटर क्यूब और 10 पावर 22 पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई करो, कितने एटम्स होंगे, राइट? एंड देन इफ यू हैव टू सॉल्व एग्जैक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर दैट, you can on a supercomputer can forget about days and years and भूल जाओ फिर कितना दिन लगेगा, कुछ पता नहीं. Getting my point? And उसमें समझ लो अगर आपको एक चिप बनानी है, you have to design a chip or something, just forget about it. You'll not be able to do that. Okay, so that's the catch behind it. Though Schrodinger equation tells us everything about an electron, it is not always possible to solve a Schrodinger equation. So what we do is that we see that sometimes, again, we go back to our thing, what we need current, right? And current is charge into velocity again. So we need the statistics and how this electron moves.
So we need these two things. That's our basic goal. Okay. So for this, we for our case, we don't always need to solve entire Schrodinger equation. What we need is something known as energy versus momentum relation. So once we have energy versus momentum relation, हमारा life easy हो जाएगा. Okay, and we will again see कि वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे. Okay, so basically we need energy versus momentum relation. Now, famous energy versus momentum relation you all know is E is equal to h nu for photons, right? So अगर उसको expand करें तो hc by lambda, अगर मैं divide by 2 pi कर देता हूँ इसको, then c into 2 pi by lambda. So I think all you might be knowing this is h bar, sorry. This is h bar and this is your k. This is called wave number. So once you have this thing, so you can write E is equal to h bar c k, right? You can write this. So इससे हमको क्या क्या पता चल सकता है? See, so if I do dE by, let's say I have this and I do dE by dk. I do what? dE by dk. So I'll get h bar c. I'll do 1 by h bar dE by dk. What I get? C. C is what? The velocity, right? The velocity with which the photons are moving. So I get the velocity. I get this v part. So once I have energy versus wave number relation, I get the velocity part. Okay. Second thing is the statistics. Statistics will see what do we mean by statistics. But the idea is that once we have this kind of relation, we know our velocity. And second, we'll see how to get the statistics from this. We can know the statistics also. So our basic idea here is not to solve the entire Schrodinger equation, but to get the energy versus momentum or energy versus wave number relation. This is also called as known as dispersion relation. Okay, this is also known as dispersion relation. Okay, we call EK diagram. It's called EK diagram. That is very important to know. Okay, so how will we develop the EK diagram? Because we have to solve this E versus K. So what we are going to do is that we will use this Schrodinger equation and we will apply this Schrodinger equation for some hypothetical system, where it is possible to solve this analytically. Okay, so we'll apply this Schrodinger equation to some hypothetical system. We'll apply that and we'll develop some intuition, because if you see a silicon crystal, I told you, right? A silicon crystal also will have lots of atoms. And the Schrodinger equation will be so complex that to get even the EK relation for this is very difficult. Okay, you can get it from DFT and other things, but it is very difficult. And then those relations will not be useful to us, because again, those difficult relations will not be able to use for our other analysis. So we'll see what we do. So what we are going to do is we'll apply the Schrodinger equation for some hypothetical systems. We'll try to develop some intuitions, and using that intuition, we'll develop the EK diagram for a silicon crystal, for a crystal, which we will carry forward and do all our analysis and understand the device. Fair enough? Questions here? Any questions? कुछ questions? Come on, ask. कोई problem नहीं है यार. पूछो. Anyone? Questions? No? Yes? No question. No questions. Okay. Okay, then let's apply this for some hypothetical systems. Okay, so for first system, we are going to solve this. We will solve this Schrodinger equation entirely for this first hypothetical system. उसके बाद से हम solve नहीं करेंगे. उसके बाद से we'll just develop intuitions. Okay, and उसके बाद का solutions are available in books. I'll give you some reference. You can read, and probably in your first lab, as I told you, you will do those solutions and see. Okay, so first we will see about free particle. Okay, so what is a free particle? A free particle जिसपे कोई force नहीं लग रहा. Okay, so force को हम लिख सकते हैं minus du by dx. Okay, potential energy, we can write this, right?
So we can write force as derivative of potential energy, and if this is 0, that means your U is constant, right? So let me write it as U naught. Then so what is this free particle? Is some constant potential, sorry. And suppose there is a constant potential U naught and there is a particle, there is a single free particle which is standing there. Again, remember we are solving a 1D Schrodinger equation for single particle, for one particle. We are not going through multidimensional, and we are not going through many particle, many body here. We are solving for single particle. So now let's write Schrodinger equation for this. It will be minus h bar square by twice m d square psi of x by dx square plus u naught psi of x equal to e psi of x. Okay, so let's solve this. We can write it as minus h bar square by twice m d square psi of x by dx square plus u naught minus e psi of x equal to 0. So we can write d square psi of x by dx square plus, we can write 2m by h bar square e minus u naught. So the minus sign is absorbed in this, and I can write psi of x equal to 0. Okay, now let's assume k equal to under root of 2m e minus u naught by h bar square. Now why I'm using this as k, because here we have seen k is a wave number. I'm using the same symbol. We'll shortly know why I'm using the same symbol. I could have used any symbol, a, b, c, d, anything, because it is just substitution I'm doing. Okay, so if I do that, I can write Schrodinger equation as d square psi of x by dx square plus k square psi of x equal to 0. Now, if you solve this Schrodinger equation, you'll have psi of x equal to a e raised to plus I k x plus b e raised to minus I k x. Okay, so this is what you get when you solve this Schrodinger equation. Okay, so now let's spend some time and understand about this, and then we'll go ahead. So the thing which we have to understand about this is, first, wave function is complex. Wave function is a complex function. Okay, so if wave function is a complex function, you cannot have a real world analog of this, right? You cannot say, tell me the physical interpretation of a wave function. We cannot have a physical interpretation of a wave function. It's a complex function, and you cannot imagine or have a physical interpretation of a wave function. So if you tell anyone what is a wave function, nobody knows what is a wave function. And that was, if you go to the history, that was the thing which was most troubling Schrodinger himself, which when he has written this equation, he was most troubled about this thing, what is the wave function. Then there comes Dirac. He told wave function is nothing, but because wave function is a complex, you can write a quantity known as psi star into psi, which is magnitude of psi square. This gives you probability density. So this gives you what is the probability of finding a particle. Okay, so if you do something like, integration from some a to b psi star into psi dx, this gives you probability of finding a particle between a and b. Okay, so if suppose there is a free space and you have one point a, one point b, you know the wave function everywhere, and if you integrate between this thing, you know the probability of finding a particle. Okay, you know what is the probability that you will find a particle is here. Okay, so now you are coming somewhat close to statistics, right? This is similar to something statistic. This is where some statistics part come. You can know where the particle is, or you cannot know where the particle, but you can know the probability of finding the particle at this point through wave function. Sorry. Okay, and so this is about wave function. Now let's go back to our this solution. Now
if we look at this solution, what this solution looks like, if I'm not going into detail, but if you know, this looks like a traveling wave. You know, traveling wave is something like a raised to I kx minus omega t, right? This is a positive x direction wave, and if you see a raised to minus of I kx minus omega t, uh, I should write plus omega t, then it is negative x direction, negative x direction traveling wave. Okay, so if we take an analogy here, the wave function here looks like a traveling wave, looks like a combination of traveling wave, right? The wave function here. Now we have to remember that your wave function, actual wave function may or may not be a traveling wave, because this is a hypothetical system. Okay, why this is the hypothetical system? Because there cannot be a free particle. There cannot be a particle where there is no force everywhere from minus infinity to infinity. यहाँ पे कोई force ही नहीं लग रहा. There cannot exist anything, right, in this world कि जहाँ पे किसी को कभी force ही ना लगे. So this is a hypothetical system, and it's a combination of traveling wave. So to go further detail, let's assume that our particle here is u naught में है हमारा particle, and the particle is moving in this direction, which is a positive x direction. So our wave function, final wave function will be a e raised to plus I kx. Okay, so this will be our wave function. Now let's take an analogy. If we take an analogy of traveling wave होती है e raised to I kx minus omega t, जहां पे ये होता है wave number. Now here this was not our wave number, right? Remember, this was not wave number, this was some symbol. This was sub symbol जो हमने substitute किया था यहाँ पे. Just some substitution, okay? But if we take an analogy, this substitution looks like a wave number. Looks like a wave number. That's why we are calling it as wave number in our case. In our case, we are calling it as wave number. Now there is another way to understand this, which is through de Broglie's principle. Well, we'll not go into that detail today, but this analogy is fair enough, right? If you see, our wave function is like a free traveling wave, and if we compare both of them, this looks like a wave number. Okay, so now let's write our wave number, which is under root of 2m e minus u naught by h bar square. So we have e equal to u naught plus h bar square k square by 2m. Fair enough. So now we have what? ek diagram. So हमारे पास आ गया ek diagram. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि we have now ek diagrams. See, for this hypothetical system, it was easy. U naught was constant. We could put here. We could write the differential equation. We could solve this differential equation, find the wave function, take an analogy, and find the ek diagram. Okay, but this is not possible always. We'll see later. But this is what our ek diagram is. Okay, so let's plot this ek diagram. How will this looks like? This will look something like this, where this is u naught and this is h bar square k square by twice m, e versus k. ठीक है, ये समझ में आया सबको? ये चीज e के डायग्राम ऐसा दिखेगा. One thing which you have to take my word, because we are not going into that detail, the momentum of this particle, if this is an electron or anything, the momentum of this particle can be given by h bar k. Okay, can be given by h bar k. Okay, so if you accept my word for this, this is the momentum. So let's analyze this ek diagram. So our energy will be u naught plus h bar square k square by twice m. So I can write this as u naught plus p square by twice m, right? So this will be our kinetic energy, and this is our potential energy of the system, and this is our total energy, right? So now our systems, what does our system say? The ek diagram say, this point of the ek diagram where k is 0. Okay, so k is 0 means the momentum, because momentum is what? H bar k.
So if our K is 0, the momentum is 0, means your kinetic energy is 0. This point gives you what? The potential energy of your particle, the potential energy of your system. This gives you that. And this point gives you the rest of the energy, the kinetic energy. This thing gives you the kinetic energy of the system. Okay. And this is the total energy. One thing we have to understand here. Okay. So let's say potential energy नहीं देखे, if we see only the kinetic energy, p square by twice m. So this is your kinetic energy here, right? This, I'll write as kinetic energy. Next thing which you can do, you can take 1 by h bar d by dk, which we have done. So it will be what? It will be h bar k by m, right? So h bar k is momentum. Momentum by m gives you velocity. Okay. So now once you have 1 by h bar d by dk, it gives you the velocity of the particle. Simple. So once we have a EK diagram, the slope of this EK diagram gives you the velocity of the particle, right? So if I say I have an EK diagram which is like this versus I have an EK diagram which is like this, where will you think the particle will move faster? This is A, this is B. Where will you think a particle will move faster? Anyone? A, right? All of you agree, or any confusion or any other answer here? Someone for B? No? Or yes? So A, right? So just by looking at the EK diagram, you can say, okay, somehow the particle will move faster in this case compared to this case, just by looking at the EK diagram, right? So that's what give you, this EK diagram, that's why it is useful for you, right? We'll go to another thing is that if I do something like this, so you have 1 by h bar, let's say 1 by h bar dE by, let's not do it here, it's chota padega page. So you have this, right? Energy equal to u naught plus h bar square k square by twice m. Let's do dE by dk again. You'll get h bar square k by m. Let's do d square e by dk square this time. What will you get? H bar square by m. Now if I do m equal to h bar square by d square e by dk square. So what you have got is the mass of the particle, right? Here you have got the mass of the particle. So from the EK diagram, again, from the EK diagram, you can know the mass of the particle, right? Again, I have A and I have B. Where will the mass of the particle be smaller? किसका मास कम होगा अगर मेरे पास ऐसा दो EK डायग्राम है तो? Anyone? Where will the mass be smaller? नहीं समझ आया ये चीज? कैसे समझ में आएगा? See, d by dk is the slope. D square e by dk is the curvature. Curvature means the radius of curvature. कितना sharp है ये? So here d square e by dk square will be higher. Here d square e by dk square will be lower. dk square will be lower. Why? This is the curvature. d square e by dk square मतलब देखो d by dk is the slope. ये क्या बताता है? स्लोप का स्लोप, मतलब स्लोप कितना जल्दी चेंज हो रहा है, राइट? सो यहाँ पे स्लोप है ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा. यहाँ पे स्लोप ज्यादा जल्दी चेंज हो रहा है. यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ पे स्लोप धीरे धीरे चेंज हो रहा है. एग्री? सो डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर क्या बता रहा है? देखो डी, हमेशा ये ध्यान रखना, डी बाई डी क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज, राइट? दिस इज द रेट ऑफ चेंज. सो यहाँ पे हमको बता रहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस क्या था, तो इसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा था, स्लोप ज्यादा है, इसका कम है, सीधा साधा है. अब डी बाई डी के क्या बताता है कि स्लोप का रेट ऑफ चेंज कितना है. तो यहाँ पे स्लोप जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप धीरे धीरे चेंज हो रहा है. तो डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर यहाँ का ज्यादा होगा. Now if the d square e by dk square is higher, if this is higher, if you take this in denominator, this will be
lower, right? So effective, so mass of this system will be lower compared to this. क्लियर है यह चीज? और वो सीधा है, क्योंकि अगर मास कम है तो इफ यू टेक क्लासिकल थिंग, द मास इज लोअर, द वेलोसिटी विल बी हायर, और वो हमने यहाँ पे देखा ही था, इसका वेलोसिटी हाई होगा कंपेयर टू बी, राइट? एंड वो भी है कि ए का मास, ए पार्टिकल किसी का ऐसा है तो उसका मास भी कम है, सो मास कम है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली जल्दी मूव करेगा वो. क्लियर? ऑलराइट, क्वेश्चंस हियर, डाउट, क्वेश्चंस? हेलो भैया. हाँ, भैया एक टर्म पूछनी है, वेव वेक्टर. सो वेव वेक्टर इज व्हाट, मींस वेव फंक्शन और वेव नंबर? वेव फंक्शन. Okay. And other thing is this velocity. This is group velocity. So group velocity or single wave velocity means हाँ, envelope की velocity है ये, wave function के envelope की velocity है, या फिर एक single wave function की नहीं, दिस इज ग्रुप वेलोसिटी, दिस इज ग्रुप वेलोसिटी. हम लोग जान ही रहे ग्रुप वेलोसिटी. सो ओके, फॉर अदर, रमनदीप, राइट? yes हेलो. भैया. हाँ हाँ, आवाज थोड़ा अजीब आ रहा था. सो ठीक है, फॉर अदर्स डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट ग्रुप वेलोसिटी एंड दिस सिंगल वेलोसिटी. दिस इज समथिंग इन डिटेल व्हेन वी यू गो, यू विल अंडरस्टैंड. बट फॉर रमनदीप, यस, दिस इज ग्रुप वेलोसिटी, दिस इज ग्रुप वेलोसिटी. Okay भैया. So sometime I'll tell you why this is group velocity. Okay, so we have a good argument for this. Maybe sometime later we can discuss, or after this we can discuss. But this is group velocity. For others, don't confuse between group velocity and phase velocity. सबके लिए अभी just velocity. So any other questions? So wave function, wave vector, state, ये सब एक ही नाम है, ये wave function को ही बोलते हैं, because quantum mechanics can be written in terms of wave mechanics, which we are doing today. They can also be written in terms of matrix mechanics, जहाँ पे हम vectors use करते हैं, तो wave function को ही बोला जाता है. So there is no different thing. और कई कुछ लोग इसको state भी बोलते हैं. In what state the electron is, मतलब they were asking what is the wave function of that electron. इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, ये जल्दी मूव करेगा, ये धीरे से मूव करेगा, right? And if I give you EK diagram which is something like this versus EK diagram which is something like this, you also know there is a difference of potential energy, right? Clear, everyone? And if I say the particle is at this point versus the particle is at this point, so this is the point, let's say not A, let's say this is particle at A and there this is particle at B, where the particle will have higher velocity. जल्दी, where the particle will have higher velocity, या velocity change ही नहीं होगा? बी पे ज्यादा होना चाहिए. हाँ, बी पे ज्यादा होना चाहिए ना, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी, राइट? देखो यहाँ ये दिस इज पोटेंशियल एनर्जी and this is kinetic energy. As you go upward, your kinetic energy is increasing, your kinetic energy is increasing, mass तो change नहीं होगा, तो velocity is changing, your velocity at B is higher. So that's the reason behind knowing the EK diagram. Once you know the EK diagram, जो हमको चाहिए, velocity, kinetic energy, total energy, वो सब कुछ हमको EK diagram से मिल सकता है. We don't need to know the entire wave function. Clear? This is clear for everyone? Any doubt, any question? Anything? Nothing? Okay. समझ में आ रहा है सबको? पहले मेरे को ये बताओ, समझ में आ रहा है? Do we need to change something? Slow जाए, fast जाए, कुछ? We can extend the class to 15-20 minutes, ज्यादा कोई problem नहीं है, but are you getting my point? और किसी को समझ में नहीं आ रहा? Anyone else, मतलब जो नए students है, anyone, कुछ मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है? Do we need to change something? Mohit is fine, so go ahead. Fine. I Okay. think you could take names if you want to ask questions because they are not opening up. Huh? No, so new students के नाम नहीं पता मुझे, एक बार नाम देखने और नाम तो साइड में है ना. Okay, let me see the names first. अब मेरे को पूछना पड़ेगा. Let me see कौन कौन है.
So there is Aditya, there is Sarda, there is Monica, Nishant, Om. Okay. And Shruti. Shruti. Okay. So, okay. So now so this was the mathematics we will do. I hope you have understood this mathematics. So now what we'll do is we'll try to develop some intuitions from here, and then we'll go ahead and see how we can go for how can we develop the EK diagram for our silicon crystal. So let's see the wave function. हमने wave function निकाला यहाँ का, right? So the wave function is a e raised to ikx. It's a traveling wave. So if I plot a traveling wave, sorry. So if I plot a traveling wave, it looks something like this, right? Simple. Now, looking at the wave, हमको क्या पता चलता है? Let's just see the wave. हमको क्या पता चल रहा है? ऐसा wave है और I am giving you a wave like this. What's the difference between these two waves? Come on, difference क्या है? क्या change हो रहा है यहाँ पे इस wave के बीच में? Frequency change हो रहा है. Yes, frequency change हो रहा है. और वह frequency यानी कि wavelength change हो रहा है, right? Wavelength और frequency, both are the same thing. Now, किसका wavelength ज्यादा है? ऊपर वाले का. ऊपर वाले का wavelength ज्यादा है. So k, if you write k is what? 2 pi by lambda, right? Wave number 2 pi by lambda. तो किसका k ज्यादा है? Which one will have a higher k? This one, right? Wavelength lower, तो k ज्यादा होगा, right? So this one will have a higher k. So इसका energy क्या होगा? Energy will be higher or lower? Energy of this kind of wave will be higher or lower? Okay. Ohm. बताओ इसका energy ज्यादा होगा कम होगा? हाँ? ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. Energy will be higher, right? So looking at the wave also you can see that this kind of wave will have a higher energy compared to this. Okay, so जैसे जैसे तुम्हारा wavelength या k बोलो, जब k बढ़ रहा है तो तुम्हारा energy भी बढ़ रहा है, right? So energy of this is higher. So if a particle is there जिसका wave कुछ ऐसे जा रहा है, and if another particle is there जिसका wave ऐसे है, you can within the same region you can say that this particle is at some higher energy, some at higher total energy, that you can tell from the this wave. Now let's do one thing about this wave. Okay, assume you have a string. Assume you have a string. अभी string को क्या किया तुमने? एक साइड से पकड़ लिया, and this is this long string, and ऐसा wave create करना है तुम्हें string में. Okay, जैसे तुम्हें string में wave create करना है इसके अंदर, तो तुम क्या करोगे? You can just wiggle this string, right? You can wiggle this string and you can have this wave. Assume that you want to create a wave like this. You have to wiggle slowly. ठीक है? You have to create a wave like this. You have to wiggle faster. So एक तरह से you are giving more energy to create a wave like this, right? It's simple analogy, right? Simple analogy. There is nothing new to this. Yes, you can imagine this thing, right? You have a string, you can just wiggle it, and you have to give more energy in order to create a disturbance like this. Okay, so this is nothing else. Your free particle behaves like a wave which is moving, and a string which is there, like it is like a string. ठीक है? अब तुम्हारा free particle, let's do this thing. If you have a free particle, let's say you have a wall. यहाँ पे मैंने string को बांध दिया. Somehow I'm wiggling the string. You can have string like this. Sorry, let's make it a little smaller. I can wiggle like this. I can wiggle like this. I can wiggle like this, or this, or this. सब ऐसे pattern can I create, right? If I have a string, I can create this kind of patterns. Clear? So similar, compared this to free particle. A free particle where the wave is like this, there is no restriction, right? The wave can be like this, the wave can be like this, the wave can be like this also. There is no restriction, right? Similar to this. Now energy of this is something, let's say E1, you have E2, you have E3, you have E4, you have E5. Now this is all possible. You can have any energy, and this wave
wavelength lambda is so you can have k where there is a correspondence, so you can have any wave number, you can have any energy, and that's what have given you an ek diagram which was continuous, energy versus k, which was continuous, right? There was all the k and there was all the energy possible. So you can have any kind of momentum, any kind of wiggling, and you can have any kind of energy. Now suddenly let's assume मैंने यहाँ पे एक wall बना दिया. I've created another wall here. ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, sorry. So assume that I have created इस wall को जानबूझ के यहाँ पे, हाँ, suppose I have created a wall like this. बहुत टेढ़ा wall है, but there is a wall like this. Now just tell me, if you have a wall like this, अगर ये clear हो रहा है क्या? Okay, let me draw this again. I think it is not that clear. Let me draw this again. So I have a wall like this. Suppose ये string ऐसे था. I am creating a wiggle like this. Suppose ये string ऐसे था. I am creating a wiggle like this. Suppose ये string ऐसे था. I am creating a wiggle like this. And similarly, if I go here, I'm creating a wiggle like this. I'm creating a wiggle like this, and now what I have done is I have created a wall here. ऐसा एक wall बना दिया मैंने. ये wall फिर से टेढ़ा हो जाता है बार-बार मेरा wall. Let me draw this. This is important. That's why I'm spending some time here. Let me first create a wall. And मैंने ऐसा wall बना दिया है. यहाँ पे जा रहा है. Okay. So now suppose there is no wall here, then मैं ऐसे सारे wiggle I can create, right? Now since there is a wall, will there be any change? Now tell me, will there be any change? Again, let me see कौन कौन है. Okay, so ऊपर से Aditya, please tell me, will there be any change here? Will there be any change once we have a wall on other side also? Strings में. Wall है दूसरे side में और दोनों side से I tied the string. I tie the string to the wall on both the side. Previously there was no wall there. Now there is a wall where I have tied the string on both the sides. So what will happen? Okay, Aditya, can you hear me? हाँ, हाँ, कोई change होगा? कोई change? Okay, no problem, ठीक है, कोई बात नहीं. Let's see, दूसरा कोई Vas Sarda, Monica, will there be any change? Would energy be like energy won't be changing after that? After that means? Like after we have if on the second side we can change the energy by changing the we can change the energy, but now I guess we cannot because it's like we cannot change it. Like after we have the wall on the second side, the energies cannot be changed. I guess it won't, like the frequency and the wavelength cannot be changed because it can be changed. You are getting there. There's something. Okay, good. You're getting there. There's something more to it. We'll see. Someone else, Shruti. कुछ change होगा? हाँ. There would be no displacement at the wall. It is tied. Yes. That could be a better way to tell that. Yes. So there could be no displacement at the wall, right? ये नहीं हो सकता. अगर wall पे I have tied the string on both the side, I can have this. I can have this. If I somehow wiggle faster, I can have this. But I cannot have this, right? I cannot have this. क्योंकि ये string नीचे नहीं जाएगा. ये string ऊपर भी नहीं जाएगा. I cannot have this. Clear, everyone? Do you agree with me, everyone? Monica and Aditya, do you agree with me or not? ये होगा?
Monica, you're telling कि energy change नहीं कर सकते. We can have this, but we cannot have this. That's clear. Is that okay? Like, can you tell the reason for this? Yeah, the reason for this is we have tied the string. Okay, assume that we have tied the string. दोनों साइड में हमने string को tie कर दिया. Now यहाँ पे क्या है? String is free. String is moving here. It cannot happen, right? Once we have tied the string, it has to come to zero here. It has to come to rest here. You cannot displace this. It has to come to rest here. I can again have something like, this. Right? If I somehow, let's say I'm wiggling the string from center, I can wiggle the string from center even faster and have something like this. But I cannot have something like this, जहाँ पे ये end loose हो, right? वो हवा में नहीं घूम सकता, because we have tied the string. Yeah. लेकिन डिफ्लेक्शन तो आ सकते हैं ना वहां से. Deflection मतलब अपोजिट पोलैरिटी का मतलब साइन. हाँ, ऑपोजिट पोलैरिटी मतलब यही ना, ये नीचे चला गया, देखो ये नीचे में है, ये ऊपर में है, तो ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, यही डिफ्लेक्शन बोल रहे हो ना. हाँ, मतलब मैं कह रहा है कि इस एंड पे टाइट किया हुआ है तो डेफिनेटली जो है सो इस पॉइंट के ऊपर नीचे नहीं जा सकता, लेकिन इस पॉइंट से वापस से एक वेव शुरू हो सकती है जो इस एंड पे जाकर के लेफ्ट साइड के एंड पे जाकर के एंड होगा. हाँ बिल्कुल. तो वही चीज यहाँ पे आप अब इस वेव को यहाँ से देख लो, या इस वेव को यहाँ से देख लो. एक्चुअली में ये इसको हम अगर हम थोड़ा डिटेल में जाए तो इसको हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं. स्टैंडिंग वेव एक्चुअली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अ ट्रैवलिंग वेव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अ ट्रैवलिंग वेव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो उससे ही ये बनता है स्टैंडिंग वेव एक्चुअली. बट इफ यू डोंट गो देयर, सो हाँ बिल्कुल सही, यहाँ से भी वेव यहाँ जा सकता है, तो वही चीज है ना. यहाँ से वेव देख लो या यहाँ से देख लो, वेव जा रहा है. Clear? This is clear? Yes. Okay. So this is the same thing which happened with wave function. Wave function is no different. So free particle में क्या था? Free particle में wave function was free. It was free to move anyway, free to change anything. So now your energy was changing, and your energy can change at any value. मतलब मैंने बहुत डिफरेंट में बनाया, बट ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो. So you can change by a little amount, your can change by a little amount, and this will be continuous. Right? This will be continuous. But as soon as you put some restriction, as soon as you put some condition, which is called boundary condition, ठीक है, as soon as you put some boundary condition, तुम्हारा सारी energy is not possible. Now see, this will have some energy. Now this would have some energy, right? Wavelength थोड़ा तो change हुआ, but ये energy possible नहीं है, अब सीधा ये wavelength हो सकता है. So now what will happen? You'll have something like EK diagram, but now all energies are not possible. Maybe this energy and this wavelength is possible. Maybe this energy and this wavelength is possible. Maybe this energy and this wavelength is possible. Okay. So अब क्या हुआ? अब हमारा EK diagram जो है वो discrete हो गया. Okay, discrete हो गया. या तो इसको हम बोलते हैं quantization of energies. So this is what happens. This is where the quantum mechanics has got his name. This is called quantization or quantization of energy, and this is very natural. There is no equation or anything here. This is very natural. As soon as you put some boundary condition or as soon as you put some restriction, there is going to be quantization. There is going to be something which is allowed. There is going to be something which is not allowed. Okay. So now if you have to create a system like this, I can say if I create a system, if I create a system like this, if I create, this is the potential energy. Potential energy कैसा है? यहाँ पे मेरा potential energy constant है U naught, और यहाँ पे मेरा potential energy infinity है इसके बाहर. So this is from minus A to A. Let's say the length is 2i A. Sorry, 2A नहीं लेते इसको, थोड़ा confusion हो जाएगा जो लोग last time किए उसके लिए. तो let's make it. So let's take it 0 to A, and your length is A. So within A, your wavelength is U naught, और उसके बाहर infinite है. Right? And if you plot the wave function inside, your wave function will start and has to go to 0 here. Because why it has to go to 0? You write the Schrodinger equation here, minus h bar square by twice m d square psi by dx square plus u क्या, infinite psi of x equal to e psi of x.
Now यहाँ पे अगर infinite है, there cannot be anything which you can multiply to infinite to make it a finite energy. Not possible. So psi can only be 0. So mathematically हम ऐसा करते हैं, तो इसके बाहर psi 0 होगा. Otherwise, you take the analogy of a fixed wall, an infinite potential well is like a fixed wall, and the wave function will be like this. But then again, if you plot another wave function, you can have only wave function like this. You cannot have any other in between. So if you draw the EK diagram, EK diagram of a infinite potential well, this is called infinite potential well, you'll see the EK diagram to be something like discrete. ठीक है, ऐसा EK diagram दिखेगा. It is still following the same h bar square k square by twice m wala curve. It is still following same curve, but the energies, all the energies are not allowed. There are only some energies which are allowed, and there are some energies which are not allowed. Clear, everyone? Everyone, ये clear है? कुछ question? Yeah, can you please explain again infinite sure, potential well वाला बात? हाँ, बताता हूँ. हाँ, सबका नाम हो गया, मैं सबसे पूछ लिया. Okay, so infinite potential well is saying that, so your potential energy, so there is two region. There is region, so let's say there is region x less than 0, there is x greater than 0 and less than a, and there are region x greater than a. So in this region, your potential energy is infinite. In this also, your potential energy is infinite, and here your potential energy is constant. So here, if you see only in between, it act like a free particle, right? A constant potential energy और एक particle है, तो free particle जैसा है. लेकिन जैसे ही हम इसके बाहर जाएंगे, x greater than a or x less than 0, the potential energy is infinite. Now, if you put infinite here in your Schrodinger equation, so there are two terms here. So एक infinite multiply by a value, and right side में अगर हम देखेंगे तो energy है. So energy अगर हमको चाहिए, मतलब if you want a particle to be here, its total energy should be something, right? कुछ energy होगा इसका. यहाँ पे इसका ज्यादा एनर्जी, यहाँ पे कम एनर्जी है, यहाँ पे और भी ज्यादा एनर्जी है, बट कुछ एनर्जी होगा, राइट? सो ये एनर्जी चाहिए, मतलब कुछ फाइनाइट एनर्जी चाहिए हमको. नाउ यहाँ पे इनफाइनाइट है, it's equal to finite is not possible, right? This is not possible. So you cannot have anything here. You cannot have a wave function here. It means the particle doesn't exist. The particle cannot go outside this. I'm coming to that, but this tells us if the wave function is 0, this tells us particle cannot go outside this, and there is no particle which exists here in the language of quantum mechanics. To get an analogy, मैंने दिया था जो string वाला है कि it's like a string which is tied at both the end. So you'll have quantization, but the particle cannot exist here. So particle can only exist in between, and this gives you quantization, that you can have only certain amount of wavelength or wave number possible. If k become discrete, k1, k2, so as your energy become discrete, E1, E2. So you can only have discrete amount of energy. So your EK diagram will be a discrete EK diagram. Am I clear now? Okay. So this is what happens as soon as you put some restriction, that your wave energy cannot, now you cannot have all the allowed energies. Okay. Another thing which comes from the question, ओम का जो क्वेश्चन, ओम राइट? तुमने क्वेश्चन पूछा था ना अभी? हाँ, ओके. हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ आवाज पहचानने का. So okay, so another thing which came from this question is that we know ये wave function है. So wave function, if I do psi star into psi, which is equal to magnitude of psi square, so I can plot this wave function as this, right? इसको अगर मैं square करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना? फिर इसके ऊपर देखेंगे तो एनर्जी है, so probability of finding the particle is maximum at center, है ना? अब पार्टिकल अगर मेरा इस एनर्जी में चला गया, इस एनर्जी स्टेट में चला गया, समटाइम वी कॉल इट अ स्टेट, एनर्जी स्टेट. सो पार्टिकल अगर इस एनर्जी स्टेट में चला गया, देन व्हाट
is the probability of finding the particle at center, it's 0. पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ या यहाँ मिलेगा, एंड अगर वो इससे हायर एनर्जी स्टेट में चला गया तो पार्टिकल यहाँ 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 मिल सकता है. मतलब obviously this entire region is the probability, but max, I'm talking about max and probability. So the probability of finding the maximum here, it's maximum here in this case, is maximum in this case. So वो भी change होता है कि when a particle goes in different energy state, you will not find the particle everywhere. Particle can be somewhere and it cannot be somewhere else. So why I'm telling that, it will be clear in a few minutes. So now let's do one more thing. Suppose मेरा ये ऐसा है. Now what I do is मैं इसको छोटा कर देता हूं. Now again take the analogy of a string. अगर एक string था, तुमने उसको लंबा same length का string है, the length of the string is not changing, let's say, and उस string को मैंने दो wall के बीच में tie किया, and then I'm wiggling the string. Now मैंने वो wall को पास में ले आया, and I'm again wiggling the string. What will happen? What will happen? As an analogy, tell me in terms of wavelength. कुछ फर्क आएगा इन दोनों के बीच में in terms of wavelength? Again, let's start from आदित्य कुछ चेंज आएगा इन दोनों के बीच में? In terms of wavelength कुछ चेंज दिख रहा है? हाँ. Let's say this is B, this is A part. So B का wavelength क्या है? B का wavelength कम है और A का ज़्यादा. B का wavelength कम हो गया. B का wavelength कम हो गया. Let's talk in terms of K. अब you guys should automatically talk now in terms of K. So B का K क्या है? Wavelength कम है तो K ज़्यादा है, right? ज़्यादा होगा, हाँ. Right, K ज़्यादा है. K ज़्यादा है तो इसका energy ज़्यादा होगा. Energy ज़्यादा होगा, right? So see what happens. अब हमने क्या किया है, हमने हमारे पास ये वेल था जो बहुत बड़ा था, हमने वेल को छोटा कर दिया. वेल को छोटा कर दिया तो सेम पार्टिकल था, सेम स्टेट में था. अब क्या हो गया, उसका एनर्जी बढ़ गया, राइट? सो दिस इज अनदर consequence of quantization which we call confinement. This is called confinement. So confinement tells you कि ये distance कितना है. अगर ये distance ज्यादा है और मैंने इसका distance कम कर दिया, let's say it is B. So every particle, the particle is in first state. So इसका energy, let's say it is E1, E2. You can say that E2 is greater than E1. This is the ground state, lowest energy. Similarly, इसका जो ऐसा energy होगा, इसका दूर होगा, right? So अगर मैं E के डायग्राम बनाए हम, so अगर A के लिए E के डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, और B के लिए E के डायग्राम बनाएंगे so उसका एनर्जी ज्यादा होगा, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं हम मोर कन्फाइंड. दिस इज मोर कन्फाइंड सिस्टम. सो इफ आई इंक्रीज द कन्फाइनमेंट, योर एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट? एंड इफ यू रिड्यूस द कन्फाइनमेंट, योर एनर्जी ऑल्सो रिड्यूसेस. सो देयर इज अ इफेक्ट ऑफ कन्फाइनमेंट ऑन एनर्जीज. सो जो हम जैसा वेल बना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि हम कन्फाइन ज्यादा करेंगे, कन्फाइन कम करेंगे, उससे हमारी एनर्जीज में फर्क आएगा. दिस इज क्लियर एवरीवन? आदित्य क्लियर है? भैया, हाँ, आई हैव अ डाउट कि जैसे यहाँ पे एनर्जीज का तो ठीक है, मतलब सेम लेवल पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है. हाँ. तो कर्वेचर पे चेंज होना चाहिए ना, कि कर्वेचर सेम रहेगा? कर्वेचर सेम रहेगा, खाली एनर्जी दूर जाएंगे. कर्वेचर क्योंकि हम ये बेटर एक्सप्लेन इक्वेशन से होगा, क्योंकि देखोगे तो इक्वेशन में हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं. सी द एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल, वो विल सी लेटर, बट द एनर्जी h² k² by twice m. So the form of the equation is not changing. See what is happening. कर्वेचर कौन डिसाइड कर रहा है? ये इक्वेशन डिसाइड कर रहा है, राइट? h² k² by twice m. इस इक्वेशन में हम चीज देखते हैं. इस इक्वेशन में h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो भी फिक्स है. तो वो सब फिक्स है, और E वर्सेस K मैं बना रहा हूं.
सो कर्वेचर कैसे चेंज होगा? कर्वेचर तो चेंज हो ही नहीं सकता अनलेस आई तो चेंज वो द मतलब पार्टिकल। अच्छा, तो इसमें मतलब वो पोजीशन सेम है, मतलब पोटेंशियल सेम है, के और ई में फिर हम लोग का गैप्स आ रहा है। यस, ई में गैप्स आ रहे हैं पूरा। ऐसा कैसे रहेगा कर्वेचर? पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ये है, ये हम चेंज नहीं कर रहे। बट क्या हो रहा है कि जो पहला अलाउड एनर्जी स्टेट था, अलाउड, अब हमारे पास है ना, एक चीज हमें समझनी है कि पहले जो हमारा ईके डायग्राम था उसमें हमारा पार्टिकल कहीं भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था, राइट? अब हमारा जो ईके डायग्राम है उसमें पार्टिकल यहाँ पे नहीं हो सकता, उसको या तो यहाँ पे रहना पड़ेगा, या तो जंप करके यहाँ जाना पड़ेगा, या तो यहाँ जाना पड़ेगा। ओके, सो अभी भी वो फॉलो h बार स्क्वायर k स्क्वायर बाय ट्वाइस m कर रहा है, लेकिन अब जो k का वैल्यू अलाउड है, अलाउड जो k का वैल्यू है वो अब चेंज हो गया। वो पहले ये अलाउड था, अब अगर हम उसको कन्फाइन कर देंगे तो ये अलाउड नहीं होगा, ये अलाउड होगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, राइट? अब उसको जंप करना है तो उसको यहाँ पे जंप करना पड़ेगा, अब वो यहाँ से यहाँ पे नहीं जा सकता। सो अगर मैं एक ही के डायग्राम में बनाते हैं, लेट्स से एक ही के डायग्राम लेते हैं, ये पहला बनाते हैं फॉर पार्ट ए, और ये हम बनाते हैं फॉर पार्ट बी। सो पार्ट बी कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? सो पहला जो इलेक्ट्रॉन था, पहले हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकता था, अब वो यहाँ पे नहीं रह सकता, वो बी है तो उसको यहाँ जाना पड़ेगा, राइट? तो उसका जो एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वो चेंज हो गया, सेकंड स्टेट भी चेंज हो गया, और डिफरेंस भी चेंज होता है एनर्जी स्टेट के बीच। सिर्फ एनर्जी हाई नहीं होती, डिफरेंस भी हाई होता है। क्लियर? ओके, हाँ। सो कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा, बट अलाउड स्टेट, इक्वेशन हमारा चेंज हो रहा है, अलाउड स्टेट चेंज हो रहा है। दैट इज क्लियर एवरीवन? ओके, और किसी को भी डाउट था कुछ? आई थिंक समवन स्पोक इन बिटवीन, राइट? नहीं? ओके, if this is clear, let's make a slight change in this diagram. So now अब हमारे पास जो इनफाइनाइट था ना, अब हम उसको फाइनाइट कर देते हैं। अब हम उसको फाइनाइट कर देते हैं। लॉजिकल बताओ, डोंट टॉक अबाउट, डोंट गो इनटू एनर्जी और एनीथिंग, विल सी दैट। एक लॉजिकल बताओ, हमारे पास पहले इनफाइनाइट था, सो हमारा वेव फंक्शन था जो यहाँ पे जीरो था, यहाँ आके वापस जीरो हो जा रहा था। इट इज लाइक अ स्ट्रिंग टाइड टू टू वॉल्स, जीरो जीरो हो जा रहा था। अब हमारा फाइनाइट नहीं है, तो वेव फंक्शन ऐसा जाएगा, बट यहाँ पे जीरो होगा या नहीं होगा? ओके, सो एनीवन, लेट्स से शारदा बताओ, यहाँ पे जीरो होगा या नहीं होगा? अब मैंने क्या किया, अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल था, तो वेव पार्टिकल वहां जा ही नहीं सकता। अब यहाँ पे फाइनाइट पोटेंशियल है, सम u1, यहाँ पे सम u0। सो अब मेरा जो वेव फंक्शन है वो यहाँ पे वॉल पे कैसा होगा? जीरो जाएगा या नहीं जाएगा? भैया थोड़ा सा तो कुछ होगा, मतलब कंप्लीटली जीरो तो नहीं होगा। राइट, कंप्लीटली जीरो नहीं हो सकता। एनीवन एल्स कुछ? ओ, जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ बताओ। डोंट नो भैया, नहीं समझ आ रहा। आई थिंक क्या ऊपर भी जा सकता है क्या ये? हाँ, मतलब तुम सोचो, जीरो होगा नहीं होगा, ऊपर जा सकता है नहीं जा सकता, हम देखते हैं, बट तुम्हारे हिसाब से कुछ होना चाहिए, मतलब ऊपर जा सकता है। टेल एनीथिंग व्हाट? हाँ ठीक है, हाँ मतलब अगर इनफाइनाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ऊपर भी जा सकता है अलग। हाँ ठीक है। और एनीवन एल्स? मोनिका, क्या होगा कुछ? वॉल की जो एंडिंग होगी, we'll get some finite wave function there. वॉल की एंडिंग पे जीरो तो समझ में आ रहा है, राइट? इंट्यूशन से हम बोल सकते हैं कि आप जीरो नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो दैट रेस्ट्रिक्शन, राइट? यहाँ पे इनफाइनाइट था, अब इनफाइनाइट नहीं है, तो जीरो नहीं होगा। एंड ऑल यू आर राइट, यहाँ पे जीरो नहीं होता, इट विल गो समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा बाहर चला जाएगा। विल सी द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस। फर्स्ट लेट्स एड्रेस ईच ऑफ योर क्वेश्चन वन बाय वन। सो जैसे ओम ने बोला ऊपर जा सकता है कि नहीं, तो ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज देखो ऊपर जाने के लिए तुमको क्या चाहिएगा? अब अंदर में देखो, यहाँ अंदर में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो अंदर तो वेव फंक्शन वैसा ही रहना चाहिए। अब अगर मेरे को वेव फंक्शन को ऐसे करना है और उसको ऊपर लेके जाना है, देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी। अब टेक एवरी एनालॉजी फ्रॉम अ स्ट्रिंग, देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी। ऐसा तो नहीं हो सकता, डिसकंटिन्यूटी तो नहीं आ सकती, राइट? पर ऐसा कुछ हो सकता है,
ऐसा कुछ हो सकता है। तो वेव फंक्शन एक और चीज जो हमने छोड़ दिया है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग मैथ, वेव फंक्शन हैज टू बी कंटिन्यूअस इवन एट द बाउंड्री। सो डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, बट ये हायर, इसका एनर्जी पर बढ़ गया, ये हायर एनर्जी स्टेट है, लोअर एनर्जी स्टेट का नहीं है। सो लोअर एनर्जी स्टेट विल लुक समथिंग लाइक दिस, and this is very clear, right? What we are doing is in a way we are loosening our confinement. We are loosening our confinement, or we are reducing the restriction. So confinement is a restriction, right? So if I write confinement, it is similar to restriction, some kind of restriction. So we are reducing the restriction here, right? We are reducing our confinement, we are reducing our restriction. So यहाँ पे हम restriction reduce कर रहे हैं, sorry, increase नहीं कर रहे, हम restriction रिड्यूस कर रहे हैं। सो जैसे रेस्ट्रिक्शन रिड्यूस होता है, हमारा वेव फंक्शन थोड़ा सा बाहर चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वेव फंक्शन थोड़ा सा बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि हमेशा लोगों को प्रॉब्लम करती है, विच इज टू सी दिस थिंग। लेट मी आस्क यू, इज देयर एनीथिंग विच इज troubling you if I say my wave function looks like this? Is there anything which is troubling you? Anyone? श्रुति, कुछ गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पे? Sudden change in potential. Sudden change in potential है, potential let's say is the input, we cannot have any control on that, वो तो ऐसे ही रहेगा। बट यहाँ पे कोई चेंज दिख रहा है क्या? is with respect to this, is with respect to this area, is there something which is strange? I don't know. Okay, no problem. So and particle which is here, what is the total energy of that particle? Some total energy, something, right? So if I plot the ek diagram, my ek diagram should look suppose a particle is here, this is u naught. यहाँ पे जो particle का energy was little higher than u naught है, right? Now ये particle यहाँ पे गया, यहाँ पे भी उसका energy वो ही रहेगा same. Now in this region, your potential energy was u naught, your total energy was E, total energy was higher than the potential energy. But here what happens? Your total energy, this is always total energy, your total energy is lower than the potential energy. Now this is something which is not, there is no classical analog of this. Your total energy now is lower than your potential energy, because you always write total energy as kinetic energy plus potential energy, but in this region your total energy is lower than the potential energy. Now this is very strange. This is very strange कि वहां पे, and because your wave function is there, because your wave function is there, you can write psi star into psi. So there is a finite probability. There is a finite probability that the particle can be here. So actually it is possible for a particle to have a total energy which is less than the potential energy. There is only quantum mechanically possible. There is no analogy for this. You got my point? So ऐसा होता है। अब ये चीज को हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे? Let's say I am making a system like this. I am making a system like this. अब ये फाइनाइट है, मैंने ऐसा बनाया, मेरा वेव क्या करेगा? ऐसे जाएगा नीचे में, but then once it comes here, it is again free. So wave here is, it is यहाँ पे normal है, normal मतलब it is behaving like a free particle. So यहाँ पे the energy is, total energy is higher than the potential energy. यहाँ पे total energy is lower than the potential energy, but here again total energy is higher than the potential energy. So what happens? See, so इसको हम analogy लेते हैं. So this is a potential, right? So analogy हम अगर classical में लेते हैं, suppose you have nothing here, you have a wall here, there is a wall, and there is again a room here, there is a empty room. This is empty, this is also empty. So if you throw a ball, वो क्या होगा? Wall पे strike करके वापस आ जाएगा. But यहाँ पे जो potential है, it is also a wall, right? हम systems में, हमारे devices में potential is acting as a wall, right? But हमारे device में अगर हमारा wall बहुत पतला है, और if you throw a particle at that wall
एंड हमारा वॉल बहुत पतला है, सो जरूरी नहीं है पार्टिकल वापस आए, पार्टिकल कैन गो थ्रू द वॉल एंड कैन कम हियर. ओके, दिस इज नोन एज टनलिंग. This is known as quantum mechanical tunneling, and this will be very important when you go to MOSFET to understand something. So it is possible, but again it will depend on your wall. कि suppose मैंने wall ऐसा बनाया जो कि बहुत दूर है, and then so what will happen? Your wave function will be something like this. ये नीचे जाएगा, जाते 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 जीरो हो जाएगा. जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, right? So it will depend upon this thickness of the wall, and it will also depend upon the height of the wall. Suppose मेरा height बहुत ज्यादा है यहाँ पे, so wave function जल्दी जीरो हो जाएगा, because you see इसको कैसे समझेंगे कि मेरा height अगर infinite हो जाता है तो wave function जीरो है, मेरा height अगर finite होता है तो wave function कुछ होता है बीच में. So obviously there will be some continuum, right? जैसे जैसे height बढ़ेगा wave function नीचे कम होता जाएगा, reduce and then go to zero. Okay, so this depend upon the thickness and the height of the wall. Clear everyone? Questions here? Any questions? भैया हाँ, जो लास्ट स्लाइड में हाँ, okay. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने दिखाया था जिसमें मतलब वाला डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला, हाँ, तो हाँ, इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है ना कि मतलब पार्टिकल वहां पर होगा या नहीं. हाँ, हाँ. तो हम इसे डायरेक्टली एनर्जी से मतलब किस रिलेशन से रिलेट कर रहे हैं? एनर्जी हम ये बता रहे हैं ना कि हमारा वेव फंक्शन है तो एनर्जी होगा ना. सॉरी, ये वेव फंक्शन है हमारा, कुछ साई ऑफ एक्स है ना हमारे पास, ये. सो इसका ईके डायग्राम तो होगा ना, तो इस एनर्जी स्टेट में होगा. सो एक और चीज, जैसे ये ई है, एक ई का वैल्यू है, सो उस ई के वैल्यू के लिए कुछ साई का वैल्यू होगा. देखो आप श्रोडिंगर इक्वेशन लिखो, -h/² / d² psi by dx² प्लस u psi इक्वल टू e psi, राइट? सो e का अगर अलग अलग वैल्यू है, फॉर सम वैल्यू ऑफ e देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ psi, राइट, जो इसको सॉल्व करेगा. फॉर अनदर वैल्यू ऑफ e देयर विल बी अनदर वैल्यू ऑफ psi, राइट? सो हर एनर्जी स्टेट के साथ एक अलग वेव फंक्शन भी होता है. psi1 e1 के साथ, e2 के साथ psi2 होगा. सो वेव फंक्शन है तो वो एक एनर्जी स्टेट भी है. इट इज इंटरचेंजेबली कॉल्ड समटाइम. सो जैसे मैंने बोला ये वेव फंक्शन है. अब जब हम बोलते हैं कि हमारा वेव फंक्शन ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राइट, तो हम बोलते हैं ना उसका एनर्जी बढ़ गया पार्टिकल का, राइट, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम हो गया तो एनर्जी बढ़ गया. एनर्जी बढ़ गया तो देखो उसका वेव फंक्शन चेंज हुआ तो एनर्जी बढ़ गया. सो हर एनर्जी के साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है. तो हम बोल रहे हैं कि अगर किसी का वेव फंक्शन ऐसा है तो पार्टिकल का कुछ एनर्जी है और वो एनर्जी सेम रहेगा थ्रू आउट. ओके, नाउ अब हम बोल रहे हैं कि देयर कैन बी एनर्जीज विच इज हियर. नाउ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ये हायर देन पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे भी हायर देन पोटेंशियल एनर्जी. मैं बोल रहा हूँ कि अगर बहुत छोटा एनर्जी अगर है जो यू नॉट से थोड़ा सा ही ज्यादा है, जो हम ई के डायग्राम में तो होगा ना, सो इस एनर्जी के अंदर हमको प्रॉब्लम होगा. इस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे तो ज्यादा है. बट ऐसा कोई एनर्जी स्टेट जो कि बहुत थोड़ा सा ही ज्यादा है यू नॉट से, जहाँ पे यहाँ पे तो ज्यादा है बट यहाँ पे कम हो गई क्योंकि U1 बड़ा है, तब प्रॉब्लम है, तब टनलिंग आएगा इन पिक्चर. ओके भैया, जब ये एनर्जी टोटल एनर्जी कम है पोटेंशियल, तो ई के डायग्राम में उसका क्या मतलब है? मतलब हाउ कैन वी सी दैट? नहीं, हम उसको नहीं बता सकते ई के डायग्राम में. मैं वही बोल रहा हूँ, इसका कोई एनालॉजी नहीं है. ना हम इसको पिक्टोरियली बता सकते हैं, ना हम इसका कोई ई के डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ना हम इसका कोई एनालॉजी दे सकते हैं. टनलिंग एक ऐसा फिनोमिना है जो नहीं बता सकते हम क्या क्यों हो रहा है. बस हमें पता है कि ऐसा हो रहा है और ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है. ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है और थियोरेटिकली ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल है, देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी. पर ये तभी दिखता है जब हमारा वॉल कम छोटा हो, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला जाएगा. बट अगर वॉल बड़ा हो गया तो पता ही नहीं चलेगा, वो पार्टिकल जीरो हो जाएगा कहीं जाके. ओके, तो इके डायग्राम में नहीं बता सकता हूँ उसको किसी तरह से कुछ. एक और ये क्वेश्चन था मेरा, यहाँ पे हम वॉल कह रहे हैं, मतलब क्या एक्चुअल सिनेरियो में क्या वहाँ पे पोटेंशियल बैरियर टाइप का होगा? यस, पोटेंशियल बैरियर टाइप का होगा. अब हम पोटेंशियल बैरियर को समझने के लिए
ठीक है, नेक्स्ट में हम पोटेंशियल बैरियर समझते हैं कैसे क्या पोटेंशियल बैरियर होता है, बट हाँ वॉल मतलब पोटेंशियल बैरियर। और वॉल का थिकनेस कम मतलब क्या, पोटेंशियल बैरियर तो में किस टाइप से कहेंगे उसको? यस वॉल का यस वो सब, थिकनेस। हाँ हाँ, पोटेंशियल एक बैरियर कितना बड़ा है, कितना दूर तक है, और थिकनेस हम वो समझेंगे। तो अभी हम लोग एक ने चीज और एनर्जी था, बैंड, हाँ बोलो। ये मतलब जब उस बैरियर को क्रॉस करना है तो हाँ डेफिनेटली या तो थिकनेस कम हो या फिर एनर्जी ज्यादा हो, तभी वो हाँ क्रॉस हाँ कर पाएगा। तो हाँ लेकिन तो ये फिर तो जो मेरा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी हाँ, एनर्जी पे टोटली वो डिपेंडेंट होगा, टनलिंग यस फिनोमेना। यस यस, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और बैरियर का थिकनेस, बैरियर का हाइट भी, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू बैरियर हाइट, इससे कितना कम है इससे कितना ज्यादा है बैरियर के रिस्पेक्ट में। अगर बैरियर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैरियर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो और अच्छे से होगा, यहाँ पे और अच्छे से, यहाँ पे और भी अच्छे से, और बैरियर का थिकनेस दोनों चीज पर डिपेंड करेगा। ओके, क्लियर एवरीवन? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं, ये सब हमारा हाइपोथेटिकल सिनारियो था, अब हम आते हैं रियल वर्ल्ड पे। सो रियल वर्ल्ड पे हमारे पास होता है एक सिलिकॉन एटम, राइट? अगर एक सिलिकॉन एटम है, उसके पास अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक सिलिकॉन एटम के पास आया तो उसको क्या दिखेगा? अट्रैक्शन। अगर मेरा एक सिलिकॉन एटम है, एम्प्टी स्टेट है, तो उसका या तो समझ लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सिलिकॉन एटम है, उसको अट्रैक्शन दिखेगा, राइट? अब अट्रैक्शन दिखेगा, देखो मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ सब, इसको इस तरह से जाते हैं, लेट्स नॉट गो इन दिस वे, लेट्स गो इन दिस वे। सपोज मेरे पास सिलिकॉन एटम है और उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड आई वांट टू understand this system, or I want to apply Schrodinger equation to this system. Okay, I want to apply Schrodinger equation to this system. तो मुझे क्या चाहिएगा आदित्य, क्या चाहिएगा मुझे अगर मेरे को इस सिस्टम के अंदर Schrodinger equation अप्लाई करना है तो? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को कैसा पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है, राइट? है ना, इलेक्ट्रॉन को कैसा पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है। सो जब एक एटम होता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी क्या दिखता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, r is the distance, radial distance, पोटेंशियल, राइट? पोटेंशियल एनर्जी q से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, ये सही है आदित्य? पोटेंशियल ये होता है ना kq/r, लिखा होगा हमने। सो पोटेंशियल 1/r होगा, r इज अ डिस्टेंस। तो अगर मेरा एक सिलिकॉन एटम है और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ऐसा कुछ पोटेंशियल दिखेगा, राइट? यहाँ पे इनफाइनाइट, बिकॉज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देख रहा हूं मैं, यहाँ से अगर हम रेडियल डिस्टेंस देखेंगे, जैसे जैसे मैं थोड़ा उल्टा बनाया, अगर मैं इसको ऐसे बनाते हैं, एक मिनट रुको। सो ये मेरा एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कुछ ऐसा पोटेंशियल दिखेगा, राइट? जब r 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइटली लोअर अट्रैक्शन है ये, और यहाँ पे कम होता जाएगा, है ना? ऐसा दिखेगा पोटेंशियल। क्लियर मोनिका? क्लियर? नो डाउट इन दिस? Will it look like this or not? Clear. ये Clear, r right? कहाँ से हाँ, ले रहे हैं? r मतलब देखो, r एक्चुअली मैं लिखने के लिए लिखा रेडियल डिस्टेंस होता है, 3 डायमेंशनल है ना, इसलिए रेडियल लिखते हैं हम लोग, रेडियस में मतलब तीनों डायमेंशन में देखो तो r लेते हैं हम लोग सेंटर ऑफ द एटम से, ऐसा समझ लो, वहां से हम r ले रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वहां तक की डिस्टेंस। यस, वहां से जितना डिस्टेंस है वहां पे, ठीक है? तो वहां पे हम देख रहे हैं। अब देखो सिलिकॉन एटम जो है, उसके अंदर जो एकदम कोर इलेक्ट्रॉन्स है, जो उसके 1s में है या फिर 1s 1p में है, वो तो कभी हमको इसमें पार्ट लेंगे ही नहीं हमारे किसी भी कंडक्शन वगैरह में, राइट? हमारे तुमने देखा होगा तो सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्लियर है? ये पता होना चाहिए, तो मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। सो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऊपर में वो पार्ट ले रहे हैं, राइट? सो जो इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल में बहुत नीचे में है, उनको हमको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए कोई काम के नहीं है। तो थोड़े से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन हमारे लिए काम के हैं। सो हम रफली इसको ऐसे बना सकते हैं। सो हम इनफाइनाइट नहीं जा रहे, इनफाइनाइट मतलब बहुत नीचे में हम नहीं देख रहे, हम यहाँ पे देख रहे हैं, रफली ऐसा बना सकते हैं इसको, इस पोटेंशियल को।
राइट। अब हमको चाहिए इस पोटेंशियल का इक्वेशन। अब इसका इक्वेशन थोड़ा टफ है क्योंकि 1/r होगा तो k/r लिखना पड़ेगा, k यहाँ पे थोड़ा दूसरा वाला k, सो 1/4 पाई लिख देता हूँ मैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r लिखना पड़ेगा, फिर उसको श्रोडिंगर इक्वेशन में डालेंगे, बहुत टफ पड़ेगा। पर हम देखो इसको अगर हम देखें तो ये कुछ कुछ फाइनाइट पोटेंशियल वेल जैसा दिखता है, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली इट लुक्स लाइक अ फाइनाइट पोटेंशियल वेल, दिखता है ना निशांत? हाँ हाँ यस राइट, मैं इसको फाइनाइट पोटेंशियल वेल से अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, यस राइट, इसको मैं कर सकता हूँ। सो ये एक अप्रोक्सीमेशन है जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिंग पेनी मॉडल। शायद स्पेलिंग गलत है, पेनी होता है कि PAN, आई डोंट रिमेम्बर, सो KP मॉडल बोल देते हैं इसको। सो ये दो जन है, इन्होंने अब किया था कि इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं फाइनाइट पोटेंशियल वेल से। सो अब हमारे पास फाइनाइट पोटेंशियल वेल हो गया, सो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जब सिलिकॉन एटम के पास रहेगा सो बिहेव करता है एज अ फाइनाइट पोटेंशियल वेल। सो नाउ लेट्स सी फाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो फाइनाइट पोटेंशियल वेल तो हमको पता है, एक इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में रहेगा तो उसका वेव फंक्शन कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी में जाएगा तो उसका वेव फंक्शन कुछ ऐसा होगा, राइट, ऐसा कुछ होगा। तो अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, सो अब ये इलेक्ट्रॉन है, एक सिलिकॉन एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये बस अकेला सिलिकॉन एटम है, सो उसका वेव फंक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, फिर जाते जाते जीरो हो जाएगा, फिर जाते जाते जीरो हो जाएगा। सो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ सिंगल सिलिकॉन एटम के पास कहां तक हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हियर, देयर विल बी सम प्रोबेबिलिटी हियर एंड देयर विल बी सम प्रोबेबिलिटी हियर आल्सो, राइट, बट दो प्रोबेबिलिटी फिर धीरे धीरे जीरो हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा। सो ये एक सिलिकॉन एटम है। अब हम क्या करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, ये एक सिलिकॉन एटम है, इसका वेव फंक्शन है, एक सिलिकॉन एटम, दूसरा सिलिकॉन एटम लेता हूं, उसका ये है, उसका वेव फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूं, ये दो सिलिकॉन एटम को आई ब्रिंग क्लोजर, इफ आई ब्रिंग दिस सिलिकॉन एटम क्लोजर, मैं क्लोज लेके आया, आई ब्रिंग इट इवन क्लोजर, इवन क्लोजर मतलब आई ब्रिंग इट क्लोज इनफ, सॉरी, आई ब्रिंग इट क्लोज इनफ सच दैट ऐसा कुछ हो जाए, दिस इज वेरी क्लोज, दोनों सिलिकॉन एटम। सो ये हुआ, इसका ऐसा कुछ है, ये सिलिकॉन एटम का ऐसे कुछ है, ओके। अब नाउ अंडरस्टैंड, लिसन माय वर्ड्स वेरी केयरफुली हियर, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिलिकॉन एटम था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और वो ऐसे घूम रहा था अपना मजे से, ये एक सिलिकॉन एटम था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो अपना यहाँ पे मजे से घूम रहा था। तो यहाँ पे फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के होने की, यहाँ पे फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के होने की। नाउ मैंने सिलिकॉन एटम को पास में ले आया, दो सिलिकॉन एटम, रिमेंबर दिस इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ये दो एनर्जी सेम है, दिस टू आर सेम, राइट, बिकॉज ये आइडेंटिकल है, इसका पोटेंशियल, इसका हाइट, ये क्योंकि ये भी सिलिकॉन एटम है तो ये पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रहेगा, ये भी सिलिकॉन एटम है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर पोटेंशियल सेम है जो कि इनपुट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है तो सब कुछ सेम रहेगा, तो वेव फंक्शन, एनर्जी सब कुछ सेम है। सो ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है और यहाँ पे है, दोनों का एनर्जी भी सेम है। अब क्या हो रहा है, अब मैं दोनों को पास में ले आया, सो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे क्या हो गया, देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि एक ही एनर्जी के दो इलेक्ट्रॉन हो, पॉसिबल, राइट, एक ही एनर्जी के दो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे। सो इज देयर अ प्रॉब्लम, मोनिका कुछ प्रॉब्लम होगा? दोनों पोटेंशियल इंटरफेयर करेंगे। हाँ, दोनों पोटेंशियल इंटरफियर किए, पोटेंशियल इंटरफियर करके मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा बन जाएगा। सो वेव फंक्शन आ रहे हैं, अब वेव फंक्शन आने की वजह से हो क्या रहा है, वेव फंक्शन इंटरफियर कर रहे हैं ऑब्वियसली, एंड वो इंटरफियरेंस को हम समझ कैसे रहे कि देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, नाउ देयर कैन बी टू इलेक्ट्रॉन एट द सेम एनर्जी स्टेट। सो इज देयर अ प्रॉब्लम ऑफ हैविंग टू इलेक्ट्रॉन एट द सेम एनर्जी स्टेट? हम स्पिन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ स्पिन, टू टाइप ऑफ स्पिन नहीं है अभी हमारे कंसीडरेशन में, तो कुछ प्रॉब्लम होगा?
You remember Pauli's exclusion principle? Yeah. What does it tell you? At particular energy state, only one electron can, like. Yes, right. At particular energy state, there can only be one electron. You cannot have, obviously, if there are spin, there can be spin up, spin down. अभी हम spin नहीं ले रहे, so there can only be one electron at a particular energy state. Clear? Anyone? किसी को यहाँ पे डाउट है? Pauli's exclusion principle सबको पता है? आदित्य पता है? Yes, भैया. Yes, right. Shruti, clear? Pauli's exclusion principle tells you that there cannot be two electron at one energy state. Yes, भैया. Yes, right. तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया. अब दो सिलिकॉन एटम जब हम पास में लेके आए, पहले जब अलग अलग था तब बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था. अब जब हम दो सिलिकॉन एटम पास में लेके आए, so because of this wave function, because there is a finite probability that electron can go here, there is a finite probability electron can go here, यहाँ पे पंगा हो गया. There is an interference of wave function and there are two electrons the same energy state, which is not possible. तो क्या होता है? We can solve this through equation, but if you are not going to equation, what happens? होता क्या है? ये energy state split हो जाता है. One energy state becomes two energy state, which is very close, closely spaced energy state. So दो wave function, अब देखो ये चीज मैथ से समझनी है तो ऐसे समझ सकते हैं हम. When two wave interfere, so wave interfere तो क्या होता है? एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है उनका, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, राइट? सो अगर मैं if I plot a wave like this and if I interfere a wave like this, there are two possibilities, right? One possibility is a wave like this and one possibility is a wave like this, right? एक पॉजिटिव इंटरफियरेंस हुआ तो ऐसा बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हुआ तो ऐसा बन जाएगा. नाउ यू सी, यहाँ पे वेवलेंथ कम है, ऑब्वियसली तुम देख रहे हो. सॉरी, वेवलेंथ ज्यादा है. वेवलेंथ ज्यादा है मतलब के कम है तो एनर्जी कम होगा इसका, और यहाँ पे इसका एनर्जी ज्यादा होगा. अब क्या हो गया? यहाँ पे दोनों का एनर्जी कुछ था, कंपेयर टू दैट उस यहाँ पे देखो, अब एक वेव भी लेंगे अगर, उसके कंपैरिजन में भी इसका वेवलेंथ बढ़ गया, मतलब उसके कंपैरिजन में भी इसका के कम हो गया. सो इवन कंपेयर टू द ओरिजिनल स्टेट दिस एनर्जी इज रिड्यूस्ड, एंड इवन कंपेयर टू द ओरिजिनल स्टेट दिस एनर्जी हैज इंक्रीज्ड. तो क्या होगा? जो हमारा ओरिजिनल स्टेट था वो नहीं रहेगा. दैट स्टेट विल बी स्प्लिट इनटू टू, वन स्टेट हियर एंड वन स्टेट हियर. एक थोड़ा सा कम एनर्जी का, एक थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी का, और एक स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे स्टेट में दूसरा इलेक्ट्रॉन. सो ऐसा हो जाएगा. क्लियर? यहाँ पे किसी को डाउट है तो बोल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन. एक नीचे एक ऊपर, एंड वी हैव टू क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी स्टेट्स. एनी डाउट हियर? भैया, हाँ, यहाँ पे जो दोनों वेव फॉर्म्स थे, मतलब जो इंटरफेयर कर रहे हैं, वो दोनों आइडेंटिकल हैं. हाँ, दोनों आइडेंटिकल है क्योंकि सिलिकॉन एटम है, कुछ भी चेंज नहीं है तो आइडेंटिकल ही होगा. तो फिर उनका जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसमें कुछ फाइनाइट एनर्जी होगी, ये कैसे गारंटी करेंगे? वो सेंटर में होगा. हम लोग वो हम गारंटी ये करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरफियरेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेंटर में हो रहा है. तो वो कहाँ पे इंटरफियर हो रहा है वेव फंक्शन, ऐसा भी नहीं कि ये पूरा का पूरा इसके साथ. देखो जहाँ इंटरफियरेंस हो रहा है वहां पे डिपेंड करेगा उस वो कितना, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से जो आया डिके हुआ वो कितना डिके हुआ, कितना नहीं हुआ, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना एनर्जी कितना होगा यहाँ पे. बट देयर विल बी अ फाइनाइट एनर्जी. कैसा होगा दैट डिपेंड्स अपॉन दिस डिस्टेंस. मतलब कंप्लीट कैंसिलेशन किसी एक पॉइंट पर ही होगा, पूरे स्पेस में नहीं होगा? हाँ, नहीं पूरे में नहीं होगा. कंप्लीट कैंसिलेशन एक पॉइंट पे होगा, क्योंकि देखो कंप्लीट कैंसिलेशन के लिए क्या चाहिए तुमको? कंप्लीट ओवरलैप चाहिए, राइट? अगर ऐसा वेव है उसका कंप्लीट ओवरलैप है तब जाके कंप्लीट कैंसिलेशन होगा, राइट? हर पॉइंट पे. बट इफ देयर इज अ पार्शियल ओवरलैप इस पॉइंट पे, so even if you see there cannot be complete zero, right? There will be some higher some lower, so कहीं पे complete होगा but कहीं पे नहीं होगा. so क्योंकि यहाँ पे complete overlap नहीं है, इसका कुछ पार्ट है और इसका कुछ पार्ट overlap हो रहा है. Clear? Doubt, questions और कुछ questions, doubt? ओम clear है? हाँ भैया, but there is a question in the chat box.
ओके, मेरे को चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है क्योंकि वो मेरा शेयर्ड स्क्रीन में, तो लेट मी सी. Why do we need to follow Pauli's exclusion principle? What will be consequence of why? See, we cannot violate Pauli's exclusion principle. Oh, if something goes, the argument goes something philosophical. Maybe Aishwarya, मैं तुमको एक article दूंगा, पढ़ लेना. It's not possible to violate Pauli's exclusion principle. So something known as fermions and something known as bosons. Fermions cannot violate Pauli's exclusion principle, and unfortunately, electrons are fermions. They cannot violate Pauli's exclusion principle. Okay, so let's go ahead. What happened? अब देखो क्या हो रहा है. एक क्वेश्चन है. हाँ, इसमें फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, कौन सा हायर में जाएगा, ये पता कैसे चलेगा हमें? दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी जाए, दोनों आइडेंटिकल है. दिस सिस्टम आर कंप्लीटली आइडेंटिकल. तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन अलग थोड़ी है. तो कोई भी कहीं गया क्या पता है, जुड़वा भाई है, कोई किधर गया कुछ पता नहीं चलेगा. So doesn't matter, right, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, because they are completely identical. ठीक है निशांत? ओके. सो अब देखो क्या हो रहा है. अब जब हमारा दो सिलिकॉन एटम पास में आए तो एक एनर्जी स्टेट का दो एनर्जी स्टेट बना. जब तीन सिलिकॉन एटम पास में आएंगे तो क्या होगा, तीन एनर्जी स्टेट बनेगा. चार पास में आएंगे तो चार एनर्जी स्टेट बनेगा. अब ये एनर्जी स्टेट बहुत क्लोजली स्पेस्ड. अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने की है कि अभी हमने सिर्फ लोअर एनर्जी स्टेट देखा, राइट. ये नीचे वाला जो कि यहाँ पे एक था और इसका एक आया और दोनों स्प्लिट होके दो एनर्जी स्टेट बन गया. बट इसके ऊपर एक और एनर्जी स्टेट इसका खुद का भी तो होगा, राइट. इसके और भी एनर्जी स्टेट होंगे ना, और इसके ऊपर भी एक और एनर्जी स्टेट होगा. अब ये दोनों पास में आएंगे तो यहाँ पे भी एक एनर्जी स्टेट बन रहा है पास पास में. यहाँ पे भी एक एनर्जी स्टेट बन रहा है पास पास में. सो नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग. क्या हो रहा है अब. तो अगर तुम इसको देखोगे तो यहाँ पे बहुत क्लोजली स्पेस एनर्जी स्टेट बन रहे हैं, फिर गैप है, फिर बहुत क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी स्टेट बन रहे हैं, फिर गैप है, फिर बहुत क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी स्टेट बन रहे हैं. सो ऐसा तुम्हारा क्रिएट होगा. सो जब इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड्स. सो जब सिंगल सिलिकॉन एटम था तब हमारे पास एनर्जी स्टेट था, और जब मल्टीपल सिलिकॉन एटम या मल्टीपल एटम जब पास में आ जाते हैं तब उनके वेव फंक्शन इंटरेक्ट होते हैं, दे फॉर्म्स एनर्जी बैंड. ओके, सो दे फॉर्म्स एनर्जी बैंड्स. सो दिस आर नोन एज एनर्जी बैंड्स. ठीक है, दिस इज क्लियर एवरीवन. सो इफ यू हैव n silicon atoms, you'll have n states in a band, in each band. ओके, अब देखो क्या हो रहा है. दूसरी चीज अब हम जाते हैं ई के डायग्राम पे. ई के डायग्राम कैसा होगा. हाँ हाँ बोलो. हाँ, सो आई हैव अ डाउट दैट इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि दो एटम्स हैं जो जिनके एनर्जी लेवल से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो एक हमारे पास में n एटम्स होंगे और उनके एनर्जी लेवल्स आपस में इंटरेक्ट करके हमारा ये कंटिन्यूम बैंड बनेगा. तो क्या हम रिवर्स बोल सकते हैं क्या कि when we are reduced with the small dimensions, then we are also reduced with less number of atoms. So basically जहाँ पे जैसे even energy level ले रहे हैं और atoms का even energy level interact होके n energy levels बना देगा, continuum of energy levels. So basically in that case the lowest energy band will be quite close to this potential well. और अगर मैं दो एटम्स का इंटरेक्शन लूंगी तो इन दैट आई हैव ओनली टू एनर्जी लेवल्स. सो मींस दो एनर्जी लेवल्स में जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा दैट विल नॉट बी वेरी मच क्लोज टू द दिस पोटेंशियल वेल. सो वहां से हम किसी तरीके से इफेक्टिव बैंड गैप को रिलेट कर सकते हैं. कर सकते हैं. वो देखो इफेक्टिव बैंड गैप तो तुम्हारा कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है कि ये जो स्टार्टिंग का जो एनर्जी स्टेट था वो कहाँ पे था, राइट. क्योंकि वो डिपेंड करेगा तुम्हारे इस डिस्टेंस पे, है ना. क्योंकि ये कन्फाइनमेंट ज्यादा है कम है उस पे ही
डिपेंड करेगा कि स्टेट ज्यादा एनर्जी स्टेट ऊपर है, एनर्जी स्टेट नीचे है। वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितने एटम इंटरेक्ट हो रहे हैं। एटम कितने इंटरेक्ट हो रहे हैं वो तो सिर्फ इस बैंड को बड़ा या छोटा करेंगे। इस बैंड का बैंडविड्थ, इस बैंड का जो बैंडविड्थ होगा वो ज्यादा या कम होगा, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ बैंड होंगे, कम नंबर ऑफ मतलब कम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे उसमें। लेकिन जैसे मेरे पास अगर एक एनर्जी लेवल है और उसमें दो एटम्स इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो मेरे पास में उसी एनर्जी लेवल के एक ऊपर एनर्जी लेवल आ जाएगा, एक नीचे। अगर मेरे पास n एटम्स हैं तो उसमें मेरे पास बहुत नीचे तक भी बैंड्स आएंगे। उस सेंस में उस सेंस में तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये और ये इंटरेक्ट हो जाए, ये ऊपर नीचे वाले, मतलब मुझे ये और ये नहीं देखो अगर जो साइड में तो है, मींस दो देखो ये जो है अगर ये potential इंटरेक्ट होगा तो इसके बहुत पास में एनर्जी स्टेट बनता है, बहुत पास में। इट इज लाइक कंटिन्यूअस एक बैंड बन जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे कंटिन्यूअस बैंड बन जाएगा। सो हाँ, इसका बैंड कहाँ तक कितने नीचे तक जाएगा वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कितने एटम इंटरेक्ट हो रहे हैं। Yes, so kind of it will affect the band gap effective. So band gap तो ये है ना, band gap ये है। देखो बैंड गैप जो होता है ना बल्क प्रॉपर्टीज है। बल्क प्रॉपर्टी में यू नॉर्मली टेक लॉट ऑफ एटम्स जो बहुत ज्यादा है, सो उस एटम्स को तुम कम करो ज्यादा करो फर्क नहीं पड़ता। बट अगर तुम बहुत छोटे सिस्टम में चले जाते हो, जैसे तुम 2D मटेरियल्स में चले जाते हो जहाँ पे तुम वो चेंज कर रहे हो, क्या बोलते हैं, 2-3 एटम्स है, 4-5 एटम्स है, वहां पे ऑब्वियसली बैंड गैप डिपेंड करता है कितने एटम्स है तुम्हारे पास। यस, सो अगर मेरे पास एक बल्क क्रिस्टल है तो उसको उसका डायमेंशन में रिड्यूस करते जा रही हूँ, तो मे बी around 10 nanometer तक there will be no much difference, but once एक हम लोग कोई फिक्स वैल्यू नहीं रख सकते कि इतने नैनोमीटर तक कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा तुम्हारा ए कितना है, तुम्हारा हाइट कितना है, पोटेंशियल का सब पे। बट यस, इफ यू रिड्यूस देम टू वेरी स्मॉल डायमेंशन, बैंड गैप विल डिपेंड अपॉन द थिकनेस। यस, सो मींस ओके, yes, band gap will depend upon the thickness. वहां पे something known as वो तुम आपने जो लिया था लास्ट टाइम किया था, periodic boundary condition is not valid, so तुम्हारा बहुत कुछ चेंज हो जाता है वहां पे। okay, so for others confuse मत होना, थोड़ा out of syllabus question है। so okay, energy these are called energy bands and this will happen. okay, now where were we? high diagram. So how will EK diagram looks like? So जब हमारा सिग्मा तो हमारा एनर्जी थे तो इसका EK डायग्राम हमारा ऐसा था, राइट, जो कि था h bar square k square by twice m। यहाँ पे जो m था वो इलेक्ट्रॉन का मास था और हमारा EK डायग्राम ऐसा कुछ था। अब वो तो ये एनर्जी बता रहा था ना, ये वाली एनर्जी यहाँ पे होगी, ये वाली एनर्जी यहाँ पे होगी, ये वाली एनर्जी यहाँ पे होगी। पर अब क्या हो गया, एक बैंड जो है इसी एनर्जी के आसपास इतना सारा सब कुछ स्टेट बन गया। अब इसी एनर्जी के आसपास इतना सारा स्टेट बन गया। सो अगर मैं एक बैंड का EK डायग्राम देखूं, EK डायग्राम ऑफ ईच बैंड, सो ईच बैंड का अगर हम EK डायग्राम देखें तो वो कुछ अजीब सा दिखेगा, ऐसा कुछ। जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट, बिकॉज हम प्लॉट नहीं कर रहे, बहुत अजीब सा मैंने बना दिया, ड्राइंग भी खराब हो गई। सो if I take the EK diagram of each band, the EK diagram looks something like this. And one thing which is very clear is this is not equal to h bar square k square by twice m. This is clear, right? It cannot be equal to h bar square k square by twice m, because h bar k square by twice m तो इसका कर्वेचर था। अब हमारा एक बैंड कैसा स्प्रेड हो गया उसका कर्वेचर तो हमको नहीं पता। सो अब ये ऐसा कुछ दिखेगा EK डायग्राम। अब अगर मेरे को देखो, अभी हमें प्रॉब्लम क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, तो वो तो ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन का स्टेट्स हमें मिल गया। हम किसी तरह हमें पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, किस स्टेट में, सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। बट द सेकंड थिंग वाज टू अंडरस्टैंड द वेलोसिटी, राइट। और वेलोसिटी के लिए हमको क्या करना था, 1/h bar d square e by 1/h bar d by dk। अब उसके लिए तो E वर्सेस K का रिलेशन चाहिए। अब पहले हमारे पास तो मस्त रिलेशन था h bar square k square by twice m, इसका रिलेशन क्या है, what is the relation, what is the relation, anyone? इसका रिलेशन क्या होगा आदित्य, इसका रिलेशन क्या होगा EK का?
मुझे एक डाउट हो रहा है इसमें। हाँ बताओ। ये ईके डायग्राम में जो 3 आपने डायग्राम बनाए हैं 3 बैंड के, इसमें बीच वाला तो ठीक है, मतलब समझ में आता है। ये नीचे के 2 पे मतलब ऐसा कैसे बना दिया आपने? वही मैं बोल रहा हूँ, ये हम सॉल्व नहीं कर रहे, पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो सेप ऐसा आता है। ये आई गिव यू रेफरेंस, उसमें सॉल्व करेंगे तो ऐसा सेप आता है कि सब डायग्राम का। देखो हम लेकिन इंट्यूशन नहीं आ रहा, मतलब हाँ, इसका कोई इंट्यूशन है नहीं कि इसका बैंड कैसा दिखेगा ईके, बिकॉज ये सॉल्यूशन से आता है कि ईके कैसा दिखेगा इस बैंड का। देखो इसका ईके हमें पता है h बार स्क्वायर k स्क्वायर, बट इतना पता है ना कि इसका h बार स्क्वायर k स्क्वायर नहीं होगा। वो चीज समझ में आ रही है? हाँ हाँ, वो नहीं होगा, इसका कुछ अलग होगा। अब अलग क्या होगा वो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके ही आ सकता है। सो वो फिर ऐसा आता है। अब वो उसका तो इंट्यूशन मैं नहीं दे सकता अभी कुछ कि ऐसा शेप ऐसा क्यों आएगा, बट ऐसा कुछ शेप आता है। अब सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा इस चीज को। बस श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते तो ऐसा शेप आता है। ठीक है, सॉरी इसका इंट्यूशन ऐसा इंट्यूटिवली इसका शेप ऐसा क्यों आता है, चलो मैं सोचूंगा कभी कुछ इंट्यूशन आया तो आई विल टेल यू। ठीक है, ओके। हाँ आदित्य, व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ दिस ईके डायग्राम, एक बैंड का, सिंगल बैंड का? एनी आइडिया? नहीं, मोनिका कुछ आइडिया क्या होगा? नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं पता ईके डायग्राम का रिलेशन क्या होगा। हाँ, इक्वेशन क्या है वो नहीं पता। तो अब अगर हमारे पास इक्वेशन नहीं, हाँ ये कुछ नेगेटिव पैराबोला है, तो मतलब उस इक्वेशन से यदि इसको कोरिलेट करना चाहें तो विद माइनस साइन आना चाहिए। यस यस, कुछ माइनस साइन के साथ कुछ कर सकते हैं, गुड, कुछ कोरिलेट कर सकते हैं हम लोग, दैट इज गुड। बट ये पूरी तरह पैराबोला नहीं है, तुम देखो ये कुछ अजीब सा चीज है ना? पैराबोला तो ऐसा होता है, बट यस कुछ कोरिलेशन हो सकता है, दैट इज गुड। ओम, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर हमारे पास रिलेशन नहीं है, मैथमेटिकल रिलेशन, तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? अगर हम समझ रहे कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ, हम पहले तो अगर वेलोसिटी जानना चाहते हो तो हम स्लोप से ही देख लेते हैं ना। हाँ, तो नहीं वो हम देख लेते थे कि कितना ज्यादा है कितना कम है, पर वेलोसिटी कितनी है वो कैसे पता चलेगा? वैल्यू के लिए तो वी नीड रिलेशन, राइट? यस, वैल्यू के लिए हमको मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए। सो यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज कि हमको मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए, बट हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें? सो सर इट्स 11:58, थोड़ा जा सकते हैं आगे इफ एवरीवन इज ओके? Yeah, I think that's fine. So good. I mean, see, if everybody is fine, so maybe another half an hour it could. So anyone has any problem? समझ में आ रहा है? बोर हो गए ज्यादा? ओके, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, नाम नहीं लो तो कोई कुछ नहीं बोलता। सो ओके, सो भैया तो हाँ, लाइक ये जैसे बैंड्स हैं, तो इसमें भी हर एक जो स्प्लिट अप है उसका भी अलग अलग चेंज होता जाएगा ना, मतलब उस पे भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी सब पे। यस 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 एग्जैक्टली, इसका अलग वेलोसिटी होगा, हर पॉइंट पे अलग होगा, इसका वेलोसिटी अलग होगा, हर पॉइंट पे अलग होगा। यस यस, तो वही चीज है, वो वेलोसिटी जानने के लिए हमें तो मैथमेटिकल रिलेशन तो चाहिए, अदरवाइज हम कैसे करेंगे ये चीज? अब भैया ये जो 3 लाइंस जो आपने ड्रॉ की हैं, 3 बैंड्स की या फिर एक ही बैंड का, या 3 बन गए? नहीं, एक 3 बैंड की, एक ही बैंड पूरा। देखो पूरा तो तुम्हारा ये यही चलेगा ना, h बार स्क्वायर k स्क्वायर बाय ट्वाइस है। उसमें जो एक एनर्जी स्टेट है वो स्प्रेड हो गया, तो उस स्प्रेड का मैं यहाँ पे ये बनाया। फिर ये दूसरा एनर्जी स्टेट है जो स्प्रेड हो गया, उसका ये है। अब ये उल्टा क्यों है, ये सॉल्यूशन मैथमेटिकल सॉल्यूशन से आता है श्रोडिंगर इक्वेशन के, इसका कोई एनालॉजी नहीं है मेरे पास, बस ये है प्रॉब्लम। क्लियर? दिस इज क्लियर?
और मतलब ऐसा मतलब जब उसको सॉल्व करने पे क्या ऐसा आता है जो बिल्कुल क्लोजेस्ट टू द पोटेंशियल, मतलब जो k इक्वल टू 0 पे जो पोटेंशियल के पास का जो एनर्जी बैंड है वो पहला हिस्सा इस टाइप का बनेगा, फिर दूसरा इस टाइप का बनेगा। यस पूरा आता है उससे कि कैसा शेप आएगा, पूरा शेप आता है। वो मैं दूंगा आप तुम लोगों को क्या बोलते हैं जो रेफरेंस, यू कैन सी दैट, उसमें पूरा आता है कि ऐसा बनेगा, ऐसा शेप बनेगा, नेगेटिव आएगा, स्लोप इसका ऐसा नीचे होगा, इसका स्लोप ऊपर होगा, सब आता है सॉल्यूशन से। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, तो अब हमारा प्रॉब्लम सबको समझ में आएगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ईके डायग्राम बन गया बट ईके डायग्राम का रिलेशन हमारे पास नहीं है, एंड रिलेशन वी नीड। So now what we do? So now this is, in my view, is one of the most beautiful approximation of solid state devices. But कैसे किया ये देखते हैं हम। देखो अब क्या क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड ईच थिंग। फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि ये जो एनर्जी स्टेट है ये बहुत पास पास में, दिस इज क्लियर राइट, ये बहुत पास पास में। सो इट इज एज गुड एज इफ आई कंसिडर इट एज कंटिन्यूस। सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मैं क्या कर रहा हूं, आई नो दिस इज डिस्क्रीट, but because these are very near to each other, I am considering it as continuous. तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मैंने ये लिया कि मैंने इसको कंटिन्यूस मान लिया, कंटिन्यूस मान लिया, ठीक है, ये पहला चीज। दूसरा चीज हम क्या करते हैं, बिकॉज दिस इज, हाँ भैया एक चीज बस पूछना था लास्ट। हाँ पूछो कितना ही पूछो। ये आप हमारा जो ओवरऑल है वो एक पैराबोलिक बनेगा, हाँ, और फिर एक बैंड जो है उसको हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं ना। यस तो जो जैसे एक बैंड में सपोज मेरे 10 लेवल्स हैं, सो जो पहला लेवल है उसके लिए पहला कर्वेचर, दूसरे लेवल के लिए दूसरा कर्वेचर। नहीं, ये पूरा तुम्हारा एक बैंड ही है, ये पूरा एक बैंड है। उसका पहला लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, ऐसे है। ठीक है, इसका मैं ना एक बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। नहीं ठीक है, हो गया। नहीं बड़ा मतलब मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ, मैं सोचा था उसको थोड़ा बाद में बताएंगे, वो चीज अभी कर देते हैं। तो तुम्हारा पूरा तुम्हें पता है कि एक पैराबोला बनेगा, राइट? पूरा ये बनेगा h बार स्क्वायर k स्क्वायर बाय ट्वाइस n का पैराबोला। अब उसका जो पहला एनर्जी स्टेट है ना, इट विल एक्सपांड समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ यहाँ पे एक्सपांड हो जाएगा इसका। तो दूसरा एनर्जी स्टेट है ना, उसका भी कुछ एक्सपांशन ऐसा कुछ हो जाएगा। तीसरा एनर्जी स्टेट है वो कुछ ऐसा एक्सपांड हो जाएगा। चौथा एनर्जी स्टेट मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, इसका बुक में है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ये चीज हमने देखा नहीं, बट अगर हम देखें इस चीज को, सो ऐसा एक रीजन होता है। सो देयर इज अ रीजन फ्रॉम माइनस pi by a to pi by a. What is this a? Let me tell you. So a is the distance, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक। सी दिस इज अ पीरियोडिक क्रिस्टल, राइट? ये पीरियोडिक है, और a is the period. A is the period of this crystal. Okay, A is the period of this crystal, and this period in other word is also called lattice constant, right? ये lattice constant होगा। तुम्हारा एक सिलिकॉन एटम से दूसरा सिलिकॉन एटम कितना दूर है, वो lattice constant है। So the period of this wave is nothing but a lattice constant. So minus pi by a से pi by a होता है, और उसके बाद में ये आगे और चलता जाएगा, ये 2 pi by a and other, right? So there is a postulate, अगर हम solve करते तो आता कि this and these are identical, and these are also identical. So अगर हमारा crystal periodic है, so मेरा ये repetitive होगा, तो इसका मतलब the thing which is here is identical to the things which is here. So instead of looking at all the k values, we are looking at k values which are between minus pi by a to pi by a. This is known as Brillouin zone. This is technically known as Brillouin zone. Okay, so the Brillouin zone is the region of k value minus pi by a से pi by a जहां पे हम ये चेक करते हैं, जो पूरा आइडेंटिकल होता है। सो अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो है ऐसा, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा, इस ए स्टेट पूरा एक्सपांड होगा ऐसा। हमने इन दो स्टेट को मिलाया तो हमको ऐसा कुछ बैंड डायग्राम मिला। अब ये जो है ना, अगर इसको तुम ऐसे वो करोगे, सो ऐसा कुछ दिखता है ये पूरा, ये बैंड डायग्राम पूरा ऐसा कुछ, सॉरी अरे
सो ये बैंड डायग्राम मेरा कुछ ऐसा कुछ दिखता है। तो देयर इज अ पैराबोला हियर, उस पैराबोला पे एनर्जी स्टेट्स है, हर एनर्जी स्टेट ऐसा एक्सपांड हुआ, उस एक्सपांशन को क्योंकि ये सेम है, ये मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ, इसको मैंने उठा के इस पॉइंट से पकड़ के, इस पॉइंट से पकड़ के इसको यहाँ पे ले आया, राइट। सो मेरे को वो ऐसा दिख रहा है। फिर इसको मैं जो इस पॉइंट पे एक्सपांड हुआ था ना, क्योंकि आइडेंटिकल है, इसको पकड़ के यहाँ पे ले आया तो ऐसा दिख रहा है। इस पॉइंट पे जो आइडेंटिकल था उसको यहाँ पे ले आया तो ऐसा दिख रहा है। तो एक्चुअली ये दूर दूर है और यहाँ पे ही वो एनर्जी स्टेट एक्सपांड हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो सब आइडेंटिकल है उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया। और जब हम उसको एक ब्रुलॉइन जोन में ट्रांसलेट करते हैं तब हमको ऐसा दिखता है एनर्जी बैंड डायग्राम। सो इसके लिए वो हमको h बार स्क्वायर k स्क्वायर वाला नहीं दिख रहा, ये हर स्टेट यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया, मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया, जस्ट रिपीटेशन करके। समझ में आया चीज? कुछ जो हम डिटेल में करते तब ये सब डिटेल में करते, बट इसलिए वो चीजें आई एम स्किपिंग दिस थिंग, बट डू गेट माय पॉइंट क्या हो रहा है? हाँ, सो वो चीज यहाँ पे आके तो फिर ये ऐसा दिख जो रहा है। हाँ, और जो h स्क्वायर k मतलब h स्क्वायर k स्क्वायर वाला जो पैराबोला है हमारा, वो बेसिकली हम लोग मतलब ये तो हमें वेव्स के फॉर्म में दिख रहा है जितने भी बैंड्स का हमारा है। तो वो पैराबोला फिर कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं कि ओके लाइक ये पॉइंट मतलब इस वेव का ये वाला पॉइंट कंसिडर करना है, नेक्स्ट वेव का दूसरा वाला पॉइंट कंसिडर करना है, वो कैसे फिर? वो ऐसे ही ना कि वेव जैसे सॉरी उसका हम यही देखते हैं ना कि जैसे जैसे एनर्जी स्टेट बढ़ेगा, जैसे जैसे वेव फंक्शन चेंज होगा उसका एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। सो हम लोग उसको वेवलेंथ से रिलेट कर रहे हैं ना। सो अगर हमारा वेव ऐसा है तो उसका एनर्जी कम है, अगर हमारा वेव ऐसा है तो उसका एनर्जी ज्यादा है। तो हम बोलते हैं कि ये जो वाला जो वेव होगा वो इसका होगा, ये वाला जो वेव होगा वो इसका होगा, इससे ऊपर जाएंगे तो इसका होगा। एग्जैक्ट रिलेशन तुम्हारा इक्वेशन से आ जाएगा। अगर इफ यू प्लॉट द इक्वेशन यू विल एग्जैक्टली नो कि इसका एनर्जी कितना होगा, इस वेव का एनर्जी कितना होगा, तुमको वैल्यू आ सकती है एग्जैक्टली, और इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू के हिसाब से तुम एग्जैक्टली निकाल सकते हो। बट इंट्यूशन से ऐसा समझ सकते हैं कि क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है, सॉरी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका एनर्जी कम होगा, इसका वेवलेंथ और कम हुआ तो इसका एनर्जी बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। सो वेव से ही निकाल रहे हम, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। और वहां पे हर स्टेट को फिर हमने एक्सपांड कर दिया, और हर स्टेट का बस ये प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हर स्टेट को हम मैथमेटिकली नहीं लिख पा रहे। पहले हमको मैथमेटिकल इक्वेशन था हर स्टेट का, मतलब सॉरी पूरे ईके का, अब पूरे ईके का मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। ओके क्लियर? ओके, सो पहला अप्रोक्सीमेशन जो हमने लिया यहाँ पे वो ये था कि वी हैव कंसीडर्ड इट एज कंटिन्यूअस, ओके, बिकॉज बहुत पास में है, देयर इज नो हार्म इन कंसीडरिंग इट कंटिन्यूअस, तो हमने इसको कंटिन्यूअस मान लिया। सेकंड हम क्या करते हैं, सेकंड हम एक सॉल्यूशन करते हैं, कुछ तो सॉल्व कैसे करें। सो फोर्स इक्वल टू माइनस क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सॉलिड स्टेट डिवाइस का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी सेम ई लिखते हैं। सो फोर्स इक्वल टू माइनस क्यू इनटू ई, राइट। सो अगर एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं वोल्ट बाय लेंथ, अगर dv by dx बट सम माइनस v by l। सो अगर मुझे पता है वोल्टेज, सो आई एम नॉट डूइंग दैट कैलकुलेशन, बट अगर मैं देखूं वोल्टेज, लेट्स से हम कितना वोल्ट अप्लाई कर लेंगे हमारे डिवाइस के अक्रॉस। सपोज हमारा डिवाइस है ऑफ लेंथ लेट्स से 100 नैनोमीटर, so I'll apply 1.82 volt, let's say. So 2 volt by 100 nanometer, you'll get the electric field, right? So when you get that electric field, and if you apply that electric field, you get the force. What is the force which is there on this electron, right? Now once you have the force से हम लोग displacement निकाल सकते हैं, right? Force से, so force हमारे पास आ गया। so force हमको पता है dp by dt होता है, right? या तो force equal to ma होता है। so मास हमको पता ही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। सो फोर्स कितना लगेगा हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt होता है, राइट। वेलोसिटी के लिए ये रिप्लेस कर दो, d by dt of 1 by h bar d by dk, राइट। सो एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ से यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट व्हाट, यू कैन कैलकुलेट dk, और तो चेंज इन k into dt, actually dk dt कैलकुलेट कर सकते हैं। dk dt is what is the change in k, actually you can calculate what will be the change in k, right। और for all practical purpose जो हम लोग हमारे devices में करते हैं,
for all practical purpose, we are not doing that calculation, but I'll ask some of the TA to give you that calculation in lab. So you will find that the change in K is very small. The change in K is very very small. So for all practical purpose, अगर हम देखें तो हम ऑलमोस्ट बस इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब हमारे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमारा K वहां पे जाएगा ही नहीं. फॉर ऑल पर्पस ऑफ दिस थिंग. सो सिलिकॉन के लिए अगर हम देखें, सो K हमारा इसके आसपास ही घूमता है, K इसके बाहर जाता ही नहीं. सो somehow, so the idea is, sorry, so the idea is कि सिर्फ इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. So can we somehow approximate this thing? Can we somehow approximate this thing with something which we know? So what we know is a parabola. So let's try to fit a parabola here. So हमने यहाँ पे एक पैराबोला फिट कर दिया, और इस पैराबोला को बोलते हैं CK². ये K है, ये एनर्जी है. पैराबोला को बोलते हैं CK², जहाँ पे C किस पे डिपेंड करेगा कि ये बैंड का जो लोअर पार्ट है उसका कर्वेचर कैसा है. कर्वेचर कम है इसका बैंड का, तो हमें छोटा पैराबोला फिट करना पड़ेगा. कर्वेचर ज्यादा है तो हमें बड़ा पैराबोला फिट करना पड़ेगा. तो C उस पे डिपेंड करेगा. राइट? समझ में आया ये चीज? आदित्य समझ में आया? हाँ भैया. हाँ. तो ये C ऐसे करना पड़ेगा. और फिर उसके बाद में अब देखो हम एनालॉजी क्या ले रहे हैं. फ्री पार्टिकल का हमें पता था एनर्जी होता है h² K² by twice m. यहाँ पे हमारा है E = CK². सो जब एनालॉजी ले तो ये और C सेम है, तो C इस पे डिपेंड करेगा. C ऐसा कुछ हो सकता है. अब ध्यान से सुनो ये चीज. अब हम क्या करते हैं, H हमारा H हमारा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है. वैसे तो हमारा M भी कांस्टेंट है क्योंकि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है. लेकिन अगर हम बोले कि मेरा ऐसा कोई पार्टिकल है जिसका मास है m*, और अगर ऐसा मैं कोई मास यहाँ पे फिट कर दूं ताकि C बिकम इक्वल टू h² by twice m*, राइट? अगर मैं ऐसा कोई मास डाल दूं, लेट्स फॉरगेट अबाउट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 1031 kg है, वो ठीक है. बट अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं कि मेरा एक पार्टिकल है जिसका मास m* है, और अगर मैं वो यहाँ पे डाल दूं that become equal square by 2m*. Can I write this? Right? और अगर मैं वो लिख सकता हूं तो I can plot this E versus K, where this is equal to h² K² by twice m*. Right? So what is the statement I'm making? Very important statement here. My electron, so my electron in a band behave like a free particle, but with mass m*. ये चीज समझ में आया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इस बैंड में है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है. सो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट इलेक्ट्रॉन, उसका मास कितना है छोड़ दो, वो कैसे उस पार्टिकल में वो कैसे उसमें बैठ रहा है वो हमें नहीं पता. बट अगर हम m* निकाल ले, मतलब यहाँ पे एक पैराबोला फिट कर ले, m* निकाल ले, सो हम ऐसा प्लॉट कर सकते हैं. और ये हमें पता है कि ये जो इके डायग्राम है वो फ्री पार्टिकल का होता है, कंटिन्यूअस h² K² by twice m. सो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव कर रहा है जैसे कि एक कोई फ्री पार्टिकल बिहेव करेगा, बट उस फ्री पार्टिकल का मास m* होना चाहिए. समझ में आया? इस m* को बोलते हैं इफेक्टिव मास. इस m* को बोलते हैं इफेक्टिव मास. इज दिस क्लियर? कोई डाउट? मोनिका, कोई डाउट? समझ में आया? So भैया basically what we are doing here is कि हम ये assume कर रहे हैं that it is fitting a parabola, yes, CK², but here the mass we are taking it to be effective mass.
Yes, yes. Here the mass we are taking to be effective mass because इलेक्ट्रॉन के मास से तो फिट नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन के मास का पैराबोला का तो स्लोप अलग आएगा. हमारे यहाँ पे तो हमको कुछ अलग स्लोप चाहिए. वो फिट कैसे करेंगे? m स्टार से, क्योंकि m स्टार ही चेंज कर सकते हैं यहाँ पे. We cannot change h bar, we cannot change 2, m star we can change. So हम m star से चेंज कर रहे हैं. तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि एक फ्री पार्टिकल, m स्टार वाला फ्री पार्टिकल जैसे भी बिहेव करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन वैसे बिहेव करेगा. सो डजंट मैटर कि हम अब इतना सब हमने झमेला किया. इट डजंट मैटर कि ये पीरियोडिक क्रिस्टल कैसा दिखता है. इट डजंट मैटर कि ये डेप्थ कितना ज्यादा है, कम है, सिलिकॉन है, क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये बिहेव करेगा एज अ फ्री पार्टिकल, जैसे कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं. खाली हमको क्या चाहिए? हमको m स्टार चाहिए. वी नीड द वैल्यू ऑफ m स्टार. सो स्टार्टिंग में कोई सिमुलेशन करके, डीएफटी करके, एनालिटिकल सॉल्व करके, एनालिटिकल तो नहीं हो सकता, बट डीएफटी करके कोई पैराबोला फिट करके हमको m स्टार दे दे एक बार. अगर किसी ने हमको m स्टार दे दिया, then we don't need any knowledge of silicon atom whatsoever. Just m star मिलना चाहिए. फिर हमारे पास आ गया h bar square k square by twice m star. फिर हमारे पास velocity और बाकी सब चीज भी आ जाएगा. So this is, I consider it one of the most beautiful approximation कि जितना सब तामझाम था, सब is reduced to m star, right? और वो तामझाम क्यों किया वो देखेंगे थोड़ा सा, but this is reduced to m star. Clear? हाँ. So Mohit, I think we should stop because it's I think I don't know, it's already more than 2 hours. Okay. I don't know whether they're getting it or not. Okay. So means I'll cover a little bit on this concept, right? So means we could build of different concepts on today's class. But I think today we should stop here. Means you could summarize the things. It's not go to more details because otherwise it will be difficult for them, right? It's already more than 2 hours. Okay. So I was just planning for one electron and hole concept, but okay, let's say maybe. ठीक है, means that's fine. Okay. So basically we'll now I mean for the lab we have to derive a means problem, formulate a problem, right, for the lab. So that part I think yeah, based on these concepts. Okay, so that's okay, then we can stop here. One thing you have to understand that this m star will depend upon the lattice constant, the distance a, because that will decide कि ये curvature कितना होगा, and then it will depend on this m star. One thing, that's just that thing. Otherwise, I think it is okay. So let's just stop here, and if you have any questions, we can discuss that question in 5 minutes and then just stop. Okay, I think that's okay. Can you repeat the last part जहाँ पे हम लोग फिट कर रहे थे ना पैराबोला? तो वो रेंज बेसिकली हमने कैसे लिया था, वो एक बार रिपीट करेंगे क्या? ओके, रेंज हमने कैसे लिया था? रेंज हमने कैलकुलेट किया. हमने क्या कैलकुलेट किया? लेट मी राइट हियर. हमने कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा. किसी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा -q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ई फील्ड. और उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया वोल्टेज बाय लेंथ से. सो हमने बोला कि अगर हमारा सिलिकॉन क्रिस्टल है, लेट्स से इफ द लेंथ, लेट्स से यू टेक मॉसफेट, बीजेटी और एनीथिंग, अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं टू अ लेंथ ऑफ सम अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर, और यू टेक स्मॉलर आल्सो और हायर आल्सो, सो यू टेक 100 नैनोमीटर. सो उसके हिसाब से इफ यू अप्लाई 2 वोल्ट, देन यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? So once you have electric field, you can find the force acting on the electron. Now, once you have the force acting on the electron, you can write force as this thing, dp by dt, and it is also equal to d h bar k by dt. ऐसे भी लिख सकते हैं. So f equal to h bar dk by dt, right? So ये तुम्हारे पास है, ये है, तो तुमको ये मिल जाएगा dk by dt. It gives you what? The change in k for a given time t, right?
सो अगर हमने वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कितना चेंज आएगा मैक्सिमम, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज और व्हाट इज द मैक्सिमम चेंज इन के फॉर अ गिवन टाइम टी. टाइम कितना लेना है वो थोड़ा डिटेल है, वो विल नॉट गो इनटू दैट, बट यू कैन गेट दैट चेंज इन के. और वो अगर हम देखेंगे तो वो चेंज इन के इज वेरी स्मॉल, it is maybe very near to this thing. So that's what we have done this कि वो range बहुत छोटा है इसलिए we don't have to consider. So there is no hard boundary, but हमने just एक sample calculation से लिया कि बहुत पास में ही होगा, ये बहुत छोटा होगा. Okay. Thank you. Okay. So anyone else कुछ question समझ में आया? श्रुति questions? नहीं भैया, मतलब एक चीज मुझे, पर आई डोंट नो इफ द क्वेश्चन इज राइट और नॉट. नहीं पूछो कोई प्रॉब्लम. आपने जैसे एंड में जो मतलब वेव फंक्शंस थे उनका सुपरपोजिशन किया था. हाँ. तो इनिशियली जो आप मतलब कह रहे थे कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उनकी वजह से वेव इक्वेशन सॉल्व करनी है. हाँ. तो हम उन्हें इंडिविजुअल सॉल्व करके फिर सुपरपोज कर सकते हैं, मतलब उसके बाद भी वो कॉम्प्लेक्स होता है प्रोसीजर, या फिर नहीं कर सकते ऐसा? एक्चुअली वैसे ही किया जाता है. देयर इज वन अप्रोक्सीमेशन व्हिच इज कॉल्ड लोकस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. वो ऐसे ही करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल सॉल्व करके सुपरपोजिशन करते हैं. बट देन द प्रॉब्लम इज जब दो वेव फंक्शन सुपरपोज होगा देन यू हैव टू फाइंड दिस कांस्टेंट, राइट, कि ये वेव फंक्शन जो हुआ और ये हुआ ना, तो उसके आगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, राइट, व्हिच गिव्स यू द एम्पलीट्यूड सुपरपोजिशन का. वो निकालना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. That is difficult. Actually, it is done in this way only. You solve for individual atoms, then you superpose them. That is called linear combination of atomic orbital. But then to calculate this constant, it is little tricky. But you can look into something called linear combination of atomic orbital. Linear combination of atomic orbital. This is this method to calculate this. तो भैया ये कैलकुलेशन कंप्लीटली थियोरेटिकल होती है या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी मतलब फिट करना? ये एक्सपेरिमेंटल से नहीं निकालते, दे डू थियोरेटिकल बट न्यूमेरिकल करना पड़ता है, मतलब कंप्यूटर्स पे यू हैव टू डू, कैन नॉट डू एनालिटिकली. हैंड कैलकुलेशन नहीं होता ये. सो देयर आर दिस डीएफटी एंड ऑल दोस, राइट, वो फिर ऐसा करके निकालते हैं. सो देयर आर मेनी अप्रोक्सीमेशन, k.p, डीएफटी, एलसीओ टू सॉल्व दिस थिंग. ओके, और कुछ? I think that should be enough, because anyway these concepts will be revised again and again in the class for next few lectures, so things will be more clearer for them. Yeah. Okay. I don't know whether their mind could take more, because it's already a lot of new things, right? A lot of new things, yeah. I tried to reduce the maths. I hope they have understood. I could see that, right? Huh? Yes. Well, let's see. Okay. Okay, so thank you, Mohit. I think okay, so I'll who could means I'll ask Niraj or Ablas to have the lab problems, right? Based on this. Yeah. Okay. Thank you, everyone. Thank you, sir. Yeah. So thank you. So let's close the session. Anyway, so our next class will also discuss a little bit on this. Okay. So should I share these slides or it's okay? नहीं slides नहीं, मैं तो record कर दिया है शायद. So I think it okay. Be... Then it is not needed. Okay. Yeah, I think it's recorded, right?